साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और वहाँ पर हम सब लोगों को भाग लेने का अवसर देने के कारण बड़ी खुशी का अवसर है और बड़े ही सब लोग आनंदित भी हैं और सब लोग एक उत्साह के साथ हैं कि आज का दिन क्या करने वाले हैं और किस किस विषय के बारे में जानने वाले हैं। परंतु कार्य के शुभारंभ करने से पहले जैसे कि हमारी परंपरा है दीप प्रज्वलन से हम लोग करते हैं, तो आइए दीप प्रज्वलन के लिए हम लोग सब लोग उपस्थित होते हैं। सबसे कहती हूँ कि खड़े हो जाए और दीप प्रज्वलन करें। अतिथियों से स्वागत है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए सामने आए। शुभारंभ होने के बाद आप सब ऐसे ही खड़े रहें। हम लोग देवी गान इसके बाद हम लोग करेंगे और देवी के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करेंगे। सभी देवी गान अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय D.A.V जय जय D.A.V जय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता हे धारा अक्षय D.A.V जय जय D.A.V जय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का वो दिन मान उदय D.A.V जय जय D.A.V जय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल कांतिमय लिए अटल निश्चय D.A.V जय जय D.A.V जय जय। सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। बच्चों स्थान ग्रहण करो। आप सबसे अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस दिवस को सुमंडित करने के लिए हमारे अतिथि हैं जिनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज यहाँ पर आकर के हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बड़े ही लोगों के विद्यार्थियों के काबिलियत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारा सहयोग किया है। तो मैं पहले हमारी आचार्य महोदय जी का स्वागत करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने इसकी शोभा वर्धन की है। धन्यवाद मैडम। हमारे एलएमसी सर डीजे स्वामी श्रीमान डीजे स्वामी जी का स्वागत है। सर आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है सर।
है लिटरेचर कॉन्क्लेव अर्थात साहित्यिक संगोष्ठी। उसके बारे में क्या है, क्या इसका महत्व है और क्यों हमें इस दिवस को मनाना चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या लाभ है, उसके बारे में हमारे बताने आ रही हमारी आचार्य जी, सामान्य आचार्य जी धनश्री मैडम जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा 2 शब्द हमारे लिए कहिए। Respected Dr. Swami Sir, Chairman of LLC, all the teachers present here, and to all the wonderful students of Standard 7. So this meeting which we have all gathered here is what we are calling it as a literature conclave. Now, before going to what is literature conclave, I would actually like to thank our public schools director Nisha Madam, who has taken a lot of initiative in starting this literature conclave. My thanks also goes to our regional director, Sir Dr. K.C. Simpati, and the AROs of our region for having taken lots of pain to see that this conclave reaches out to all the children of all the DAVs that we are having. Now, what is this conclave all about? Now, to tell you children, literature is an art, and it is an art of writing. Writing poems, writing of prose, fiction and drama. And when this is written, it is recorded, it is preserved, and then it is transmitted out and becomes the knowledge for the children, for everybody. Now this poem or prose or fiction or novels or the dramas or dances, whatever is being done by the people all around, is actually an expression of various forms, and then it gets connected with the ideas of permanent and universal interest. You will not be able to understand that the power of literature is so much that it connects the whole world total together. And the whole world getting connected is actually because of the social media, different social media that we are able to avail nowadays. Whatever you write, whatever you perform in form of your performing arts, whatever discussions that you are able to have, all this, when you are putting it into the various social media platforms available to you, you are able to reach out to a large number of audience and large number of people whom you are able to get connected with. But as students, you people are still not aware of what scope literature has for you. That to make you understand, to make you come so much into this world of literature and make you one such artist of repute who can spread out their knowledge everywhere in any form of art. This is an initiative which has been taken by the D.A.V. CA. So we are now giving you a platform. This
platform will allow you to showcase all the talents that you have. So when we are talking of showcasing your talents, what does it mean? It means if you are very good at writing poems, if you are very good at writing any stories, if you are very good in the language can be anything. It can be Hindi, it can be Odia, it can be English, or sometimes it can be Sanskrit also. But whatever you write, it has to be your original idea. It is not to be copied from any source. Think about it. Focus on it. Then start writing. You will be able to get varieties of ideas. And then, if you are going to show this, display this, have interactions, then today you can make yourself one big personality, like how we have one of our students here. So we here at our own local levels, we have started this conclave to find out the best talents within you. And these talents which can go up to the level of presenting themselves in front of a bigger audience. If you are being given an opportunity or a chance to be able to reach up to them. So you are still in a growing stage. Learn this art, develop this art. It's not only you. If you have anybody in your family who writes, whether it is your brothers and sisters, or your parents, or your relatives, or your neighbors, you can take help from them and start this from a lower level. Then by the time you are going to higher and higher classes, you can express it in a much better way and come out to be much better. So children, when we are discussing about literature conclave, we are not going to confine it to today's meeting only. This is going to be a continuous. Today we have the inauguration of it. As and when we go, every year we'll be trying to search new students, new talents, will bring in contact you with the authors, those whom we have in our local area first, then we'll be reaching to the higher levels. If we have any person, who is able to have a discussion with you, who can have a personal one-to-one discussion with you, we'll be taking up such people time and again to have this sort of gatherings, small gatherings, and then we can go ahead and make the literature conclave, the initiative started by D.A.V. CMC or D.A.V. CAE, into a bigger format. So are you all ready to put in some thought of yours into pen and paper, children? So how many of you are thinking that you can put your efforts? And then after a few days, we will be able to get varieties of poems coming from you. No one? Raise your hands. Yes. A good lot of children are interested in writing. Okay. We'll start making efforts. We'll start collecting it so that we will be taking up the best ones. We will be asking you all to present here, and the best one is to be selected for having it into a wonderful magazine of our school first. Okay? So do put in a lot of effort
in everything that you are doing, because literature is also an art. Think that literature also has got a lot of scope in future, which as and when we are going through, we'll be discussing more about what are the various career options that you are able to go forward with when you are into literature. We have various examples within our school whom you will be seeing by and by, and how they are able to express their inner thoughts through their wonderful poetries, through their wonderful stories, through their wonderful dramas, etc. So with this, I thank everybody here for at least listening patiently for the children, so continue to listen further and enjoy whatever is being discussed. Thank you. धन्यवाद मैडम। मैडम ने जो दो शब्द कहे, जैसे कि लिटरेचर यानी साहित्य जो है वो क्या है, हमारे कला है, आर्ट है। उन्होंने बताया कि कला है, वो कला हमारे अंदर सबके अंदर छिपी हुई है। तो उस अंतर्निहित कला को बाहर लाने, चाहे आप वो नाटक के माध्यम से लाए, चाहे वो कहानी के माध्यम से लाए, चाहे वो कविता लिखकर लाए, वो जैसे भी लाए आप लेकर आएंगे। और ये जो है आज का दिवस जो है साहित्य संगोष्ठी या लिटरेचर कॉन्क्लेव जो है वो आपको मंच प्रदान करता है कि आप अपने अंदर छिपी हुई इस अंतर्निहित गुण को आप लोगों के सामने तक लाएं और लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए हमारे लिए माध्यम बहुत सारे हैं, क्योंकि हम लोग तो विद्यालय में बैठे रहते हैं या फिर किसी भी कहीं पर भी जाएं, लिख करके हम लोग मैगजीन वगैरह पुस्तकों में दे सकते हैं। और एक सशक्त माध्यम आ गया, ऑनलाइन का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रतिभा को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और केवल अपने तक सीमित नहीं बल्कि विश्व भर में इसकी प्रचार प्रसार भी हो सकती है। इसलिए बच्चों, हम लोग आज से प्रण लेंगे मैडम के हिसाब से कि हम लोग हमारे अंदर छिपी हुई कला को इन साहित्यिक विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद मैडम, इतने सुंदर शब्द कहने के लिए और इतनी अच्छी तरह से आपने हमें समझा दिया कि आज के दिन का उद्देश्य क्या है। हमारे गणमान्य अतिथि, दूसरे अतिथि को स्वागत करने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सर आपके लिए है। हर घड़ी हर पल आपने दिया है हमारा साथ, हर घड़ी हर पल आपने दिया है हमारा साथ, चाहे त्योहार हो या हो रंगारंग कार्यक्रम, सुरीले गीत गाकर दूर किया हमारा गम। नमन करती हूँ मैं आपको, नमन करती हूँ, कामना यही है कि सदा रहे आपका साथ, सदा रहे आपका साथ। विद्यालय के पितामह हैं आप, विद्यालय आपका स्वागत है। आप मंच पर आकर के हमारे विद्यार्थियों को दर्शक करें। Well, I may be excused for speaking, addressing you all in English, because I can't venture to speak in Hindi, particularly when Bhavani sir is in front of me. Thank you, Meena Madam, for your very flattering compliment. Thank you very much. I may not deserve all those compliments. Respected Principal Mr. Dharasri Pani, esteemed teachers, and my dear students, good morning to all of you. I am happy that D.A.V, Center of Academic Excellence, and D.A.V College Management Committee, in collaboration with
DAV United Foundation has instructed to observe and organize this DAV literature conclave in all the 900 schools which are being managed by DAV institutions throughout India. The purpose is to promote literature and to promote, to initiate, to encourage reading habits among the students. We can't imagine this world without literature. As Principal Madam has rightly said during the talk, that literature has got various parts, various subjects. It's varied, like starting from essays, short stories, novels, biographies, autobiographies, art of letter writing, the dramas, plays. You see, the literature, main advantage of literature is it inspires us, it changes our attitude towards life, it increases our vocabulary, it increases our communication skills and enriches with knowledge. Well, children, you may ask me, that how does the literature inspire us? How does it changes our life attitude towards life? I will tell you a few examples. During the early part of 19th century, during the freedom struggle, a great Bengali writer, you must be knowing, or all of you must be knowing him, Bankim Chandra Chatterjee, wrote a novel in Bengali called Anand Mat. In that Anand Mat, he has written a poem, Vande Mataram, which we recite almost every day in our school. That particular one song, you can't imagine, it has inspired lakhs and lakhs and lakhs of people to join the freedom struggle. It created a patriotic spirit. That's how literature can inspire us. Then how we can change our attitude towards life. You see, I am reminded about Kavi Radharam, who in a simple poem has described the entire philosophy of life. Kehi rohi nahi rohibe nahiti bhabarango bhumi tole sabbe nijo nijo abhinaya sari bahoribe talabele. See, the same thing has been described by Shakespeare. The world is the stage. We come and do our act on the stage and we go back. Nothing is permanent in the world. It's in a simple poem how beautifully, how literally has Radha has described. And describing about the nature of the beauty. God has created this world with beautiful nature. And sometimes, we hardly get time to appreciate the nature. Our Uttamani Gopabandhu Das, when traveling in a train, for passing the Chilka Lake, beautiful Chilka Lake, then immediately he wrote a Kavita. I don't remember the entire Kavita. By the way, my second language in high school was Oriya. I appreciated this poem. Rela upore Chilika Darshan. Raha raha baspiyo sakata, dekhi bimudoro sadhu chitra pato. He said, please, Rail India, please stop for a while. I would like to enjoy the Chilka's beauty. All those who have read this poem are poems like this. The same poem like William Wordsworth's Daffodils. Daffodils, how he has written how beautiful daffodils flowers are. See, you get, your attitude will completely change. You try to enjoy the nature. And while telling the examples, we can't forget Sant Kabir. Sant Kabir, in a very simple verses, in a very local language of Hindi in those days, has described the rules of life. Dukh mein sumiran sab kare,
सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। You see, children, most of you I know, I also did it. During examinations, before results, we think of God, we go to temples, but during normal time, we never think of God or temples. So make it a point that God is always with you, whether it's bad days and good days. Well, Indian literature giants like Rabindranath Tagore, Sarathchandra Chatterjee, and Sarojini Naidu, the great poetess, and in our own Oriya language, Kanuthar Mahanti, Gopinath Mahanti, who is a Jnanapiti Award, Kalini Chandrapani, who wrote the famous novel Makino Manisha, and poets like Radha Nara, Kavi Sujya Baladev. Only yesterday I came to know that Bhavani Sar has did his PhD on Kavi Sujya Baladev. Congratulations. In our Bharat, we have got, officially we have got 15 or 16 languages. Marathi, Hindi, Telugu, Tamil, Kerala, Malayalam, Hindi, Maithili. So every language is rich with literature. Every language there are well-known writers and poets. Now, as I told you, that we should try to devote some time for literature. Whether you may not be a writer or a poet, but try your hand in writing something, at least your local daily diaries you maintain. You see, that is the type of your description. Well, I am very happy that our student Pragya writes wonderful poetry. I would like to hear the poem from her too. And I am very happy that our school has got a fairly good library. We have a Jyoti Madam, the library teacher, who is very efficient. I came to know that I was under the impression that our library has 5,000. Madam said that 16,000, more than 16,000 books are there in our library on various subjects. I request the teacher to initiate, to guide, and to encourage students to read books. What all may be according to their liking. You see, as the age changes, the books also change. For example, for children who are below 6th class, books like Panchatantra, Mitra Veda, Mitra Lam, these are the stories of Gautam Buddha. These will be very valuable books. And for the senior classes, books like Discovery of India, written by Jawaharlal Nehru. If you read Discovery of India, particularly class 10th, 11th and 12th students, you must read. It will tell you the entire Indian history and Indian culture, customs, everything is discussed there. And Pandit Jawaharlal Nehru also written a book, a letters to her daughter Indira Gandhi, letters to my daughter, in which he has described various factors about India. It is a must. And glimpses of India and Mahatma Gandhi's autobiography called My Experiments with Truth. Right. These are the certain books, which we must read to enrich our knowledge. Well, I came to know that in this literature conclave today and afternoon, you have invited eminent writers, local writers and speakers who will be participating in this workshop cum seminar, and there will be a panel discussion on various topics like career options in the field of literature, infrastructure in the field of literature, how to enter a world of books, the power of literature. I tell you, literature is one of the most powerful tools in our personal development. And in this discussion,
our DAV alumni and students and teachers to participate. So dear students, once again, I request you all that apart from your school books, which is a must, you should also read books written by eminent writers and authors. I wish today's literature conclave to be successful. With these words, I formally inaugurate the DAV Literature Conclave. Thank you very much. धन्यवाद सर। बच्चों, आपने एक चीज ध्यान से देखा, सर ने जब हमारे साथ बात की तो हमारी ये जो साहित्य संगोष्ठी की तीनों भाषाएं जो हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाती है, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं का प्रयोग किया है। जो जितने ज्ञानी होते हैं उनमें भाषा का ज्ञान उतना अधिक होता है। उन्होंने उड़िया में कहा रहो रहो हमारे बसवी और सकट, उस कविता को उन्होंने दोहराया। कबीरदास जी की कविता को दोहराई और स्वयं अंग्रेजी में उन्होंने इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की। तो चाहे जितना भी ज्ञान हो, परंतु भाषा का ज्ञान जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर जी की भाषा में हमें पुस्तकें तो विद्यालय की पढ़नी चाहिए, साथ ही साथ हमें लेखक, कविताएं, कवियों की कविता को हमेशा दिल से लगाए रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जो हमें मार्गदर्शन करता है और हमें अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हमें जुटाता है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए, सबसे सफल कब होता है इंसान? सबसे पहले इंसान तभी सफल होता है जिस कर्म क्षेत्र में है, अगर उस कर्म क्षेत्र में आपको आपको सबूत मिल जाए कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, मैं अध्यापक हूँ, मैंने अच्छा पढ़ाया है, मैंने जो काम किया है उसमें मुझे सफलता मिल रही है। हमारी सफलता हमारे सामने है। मैं दो शब्द कहना चाहूँगी। जो कल हमारे गोद में पली थी, आज आने वाले कल का भविष्य है। जिसकी उंगली हमने कल थामी थी, आज उसने हमारा हाथ थामा है। जिसको हमने कल भाषा का ज्ञान दिया, आज उसने स्वयं साहित्य रचा है। इससे बढ़कर के और चीज नहीं है, इससे बढ़कर के अध्यापक की सफलता कुछ नहीं है। तो हमारे प्रमाण के तौर पर, हमारे अध्यापकों की सफलता के तौर पर हमारी कवियत्री में कह सकती हूँ, शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ, प्रज्ञा सामने आओ और हमारे विद्यार्थियों को और हमें भी कुछ जानने दो। आप सभी को मेरा नमस्ते। यहाँ खड़े होके मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे कविता लिखने के लिए पहला पुरस्कार इसी मंच पर मिसेस D.A.V द्वारा मिली थी। वो भी प्रथम पुरस्कार मिला था और वहीं से शुरू हुआ था इस लेखिका की कहानी। तो आगे बढ़ते हुए, हिंदी दिवस अभी हाल ही में गया, हम सबको पता है, 14 सितंबर को। तो मैंने उस दिन, हमेशा तो हिंदी की हमें मान सम्मान बढ़ानी चाहिए, पर उस दिन हम थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो मैंने भी जज्बात में बहकर एक छोटी सी कविता लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई छोटा सा किनारा, तुम मेरे दरिया हो। मैं कोई छोटा सा किनारा, तुम मेरे दरिया हो। मेरे जज्बातों को अल्फाज देने वाले तुम एक जरिया हो। मेरी कलम को शाही से जितनी मोहब्बत है, उतनी ही करता वो तुम्हारी इबादत है। जब जुबान पर आते हो तुम, माशाअल्लाह कयामत ढाती हो। पूरी महफिल को अपने काबू में रखने का तुम जज्बा रखती हो। भाषा हो तुम, मगर तुम में एक अलग आकर्षण है। ऐसा लगता है जैसे हिंदी तुम हर गुण से परिपूर्ण एक साधना हो। धन्यवाद। अभी first of all, I would like to extend my heartiest gratitude to our principal ma'am, Dharashri ma'am, and all my teachers for giving me this opportunity to be a part of this literature conclave. और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। यहाँ पर मेरी माँ भी मौजूद हैं, जो कहते हैं ना कि जन्म देते हैं और जिंदगी के हर बारीकियों से आपको मिला देते हैं।
वो इंसान माँ से बढ़कर और कोई सिखा नहीं सकता। माँ और शिक्षक दोनों होते हैं, लेकिन पहली माँ होती है। और आज यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, उसकी वजह मेरी माँ है। और so let me introduce myself. My name is Pragya Panda. I am an alumnus of D.A.V Public School Berhampur, as ma'am has already told you. So I am an engineer by profession and currently working in last night Upro Infotech. और पैसे से मैं एक लेखक हूँ, मैं लेखिका हूँ, आप समझ सकते हैं। तो मैं जब भी लोगों को कहती हूँ ना आई एम ए राइटर, तो लोग हमेशा आश्चर्यचकित होकर मुझे देखते हैं। आप राइटर हैं, उसमें बड़ी बात क्या है? हम सभी लिखते हैं, तो आप पर हम में फर्क क्या है, ये हमें पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर जब क्वेश्चन बड़े हो ना, हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, हम देखते हैं कि जब क्वेश्चन बड़े होते हैं उसके आंसर हमेशा शॉर्ट और ऑन टू द पॉइंट होते हैं। तो मैंने भी साफ सरल शब्दों में 2 पंक्तियों में उन्हें जवाब दिया था। इन 2 पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। मैं शब्दों को शब्दों से मिलाती हूँ, मैं शब्दों को शब्दों से मिलाती हूँ, जज्बातों को अल्फाजों से सजाती हूँ। उसके बाद सवाल का कोई और सवाल नहीं रहा, जवाब तो हमें मिल ही गया। तो आगे बढ़ते हैं। हर लेखक ना अपने लिए एक पेन नेम चूज करता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हर कोई करता है तो मैं भी करूँ, तो उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी मैंने। बहुत सोच विचार करके मुझे ये ध्यान में आया कि मेरा नाम मैं रखूँ कहावत जिंदगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहावत जिंदगी ये कैसा नाम है? तो मुझे लगा कहावत और जिंदगी में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे जब हम एक कहावत सुनते हैं ना, हमें सुनने में बड़ा अच्छा और मज़ेदार लगता है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, सुनने में अच्छा और मज़ेदार लगता है। लेकिन कहावत और ज़िंदगी के अंदर जो मतलब छुपा हुआ होता है ना, उसे समझना, उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इन 2 शब्दों को मिलाकर अगर मैं अपना नाम देती हूँ तो माशाल्लाह मुझे लगा कि मैं आगे और भी जाऊँगी और अपने स्कूल का नाम, अपने जगह का नाम और अपने नाम और अपने शिक्षकों का नाम, माता पिता का नाम, सबका नाम आगे बढ़ाऊँगी। तो याद रखिएगा कहावत जिंदगी प्रज्ञा पंडा। अब नाम का बता दिया, अब थोड़ा सफर की बातें करते हैं। कहता है ना, आग तब तक नहीं लगती जब तक उसे चिंगारी ना मिले। तो मेरे जिंदगी में आग के लिए चिंगारी बने मेरे दोस्त, और कैसे ये भी मैं बताती हूँ आपको। और इस आग को तेज जलने में मदद करने वाले बने मेरे परिवार वाले। तो बात क्लास 9 की है, जब मैंने शुरुआत की थी लिखने की। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था कि 9th क्लास में एनसीसी के कैंप में मुझे जाने का मौका मिला, करीबन 10 दिन रुकने का मौका मिला। तो आखिरी के दिनों में पता नहीं क्यों मुझे अपने दोस्तों की याद आने लगी। तो मैंने सोचा पेन और पेपर लेती कुछ लिख डालती हूँ। लिखते लिखते वो एक पोएम बन गई। तो फिर मैंने सोचा भाई मैं तो कभी नहीं लिखा था पोएम, ऐसे कैसे बन गया? ठीक है, बना तो बना है, अभी वापस आके अपने दोस्तों को सुनाऊंगी। When I returned from there and read it to my friends, they were like, ये क्या लिखा है तुमने? And I was like, क्या इतना बुरा लिखा है मैंने? तो वो लोग बोले कि अरे नहीं भाई तूने गजब लिखा है। मैंने कहा कि मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, दोस्तों का काम होता है टांग खींचना, तो कहीं मेरी टांग ना खींच रही हो। मैंने पूछा सच्ची सच्ची बताना, अच्छा लिखा है नहीं? उन्होंने कहा बहुत ही सही लिखा है। उसके बाद से ना इस आग को चिंगारी मिल गई और सफर तब से शुरू हो गया। तो कॉलेज में जब पहुंची मैं, तब तक मैं लिखती तो थी मगर कुछ चीज़ों को बारीकी से समझना बाकी था। तो आपको पता होगा कॉलेज में लिटरेचर फेस्ट वगैरह होते रहते हैं। सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द वर्कशॉप ऑफ हेलिशा। हेलिशा को जानते हो आप लोग? हेलिशा नॉट द एक्ट्रेस, राइटर। सभी एक्ट्रेस को जानते हैं, राइटर को कोई जानता नहीं है, बहुत कम जानते हैं। सो हेलिशा, मैं भी उसी लिस्ट में शामिल थी कुछ वक्त पहले। हेलिशा का मैंने अटेंड किया, फिर मेघा राव का अटेंड किया और स्क्रिबल स्टोरीज के भी कुछ मेंबर्स आए हुए थे, उनके वर्कशॉप्स अटेंड किए। सब उनके साथ जाके फोटो खिंचा रहे हैं। मुझे भी बोले जाओ तुम भी फोटो खिंचा लो। मैंने कहा मैं जानती नहीं हूँ किस चीज़ के लिए प्रख्यात है, वो जानना तो ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि मैं तब तक ना बहुत गली थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि इतने बड़े लेखक भी हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब वर्कशॉप खत्म हुआ मैंने गूगल पे सर्च किया हेलिशा, मेघा राव ये सब कौन है, और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा दैट वाज द इंस्पिरेशन मोमेंट फॉर मी। और उनके वीडियोस देखे, बहुत जगह पर उन्होंने ओपन माइक्स किए हुए हैं। तो तब मुझे पता चला कि मैं जिस जगह को सोच के चल रही थी वो काफ़ी छोटी है और उससे भी कई लंबी कई बड़ी लेखकों की दुनिया है। तब मुझे समझ आया मुझे और आगे बढ़ना है और प्रख्यात बनना है और अच्छा काम करना है, अच्छा लिखना है। तो आपको बता दिया वर्कशॉप खत्म होने के बाद ये सब सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद से मैंने अपने आप को तराशने की और कोशिश की जिंदगी के हर मोड़ पर
ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा लिख लिया तो वहाँ पे सफ़र खत्म। हर मोड़ पर हर नई बदलाव लाने की ज़रूरत है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, जैसे कहता है ना, तो बदलाव लाना ज़रूरी है और अच्छा बदलाव लाना ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा बदलाव के लिए लिखती हूँ। तो अपने सफ़र को एक कविता के रूप में आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरा सफ़र, कविता का नाम है मेरा सफ़र। कहावत जिंदगी के सफ़र के बारे में आप सबको बताती हूँ, कैसे सब कुछ तब्दील हुआ एक लेखिका की ज़िंदगी में आप सबको सुनाती हूँ। बस एक ही ख्वाब को आंखों में सजाकर जीती थी जो, एक ईमानदार और सच्ची IAS ऑफिसर बनना चाहती है वो। ये आगे की स्टोरी है। भगवान से यही प्रार्थना करूँगी आगे जाके पूरा भी हो। बस एक ही ख्वाब को आंखों में सजाकर जीती थी जो, एक ईमानदार और सच्ची IAS ऑफिसर बनना चाहती है वो। कुछ लिख डाला मन का उसने पन्नों पर यारों, एक आम इंसान में एक लेखिका ने जन्म लिया यारों। महज कुछ पंक्तियों में कहावत जिंदगी ने लिखना शुरू किया, न जाने कितने डायरी के पन्नों को कविता और शायरी से सजा दिया। मैं बता दूं, मेरा अभी 6 से 7 डायरी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जाके पब्लिश करने का सोच रही हूँ। जब पब्लिश होगा आप सबको बताऊंगी और ज़रूर पढ़िएगा। पहले पहले ख्याल आता था कि कहीं इतना लिखने पर अल्फाज खत्म ना हो जाए। पहले पहले ख्याल आता था कि कहीं इतना लिखने पर अल्फाज खत्म न हो जाए। फिर समझ आया ना कभी अल्फाज खत्म होंगे और ना कभी जज्बात खत्म हो पाए। सफ़र अब तक काफ़ी लंबा रहा है कहावत जिंदगी के। पूरे 8 साल हो गए उसे दुनिया के सामने आए हुए। अब तक कई लोगों के दिल पर हमारे अल्फाजों का राज हुआ है। अब तक कई लोगों के दिल पर हमारे अल्फाजों का राज हुआ है। कहावत जिंदगी ने अब गर्दिशों को परिंदा बन छुआ है। धन्यवाद। फिर आपको कुछ और बताती हूँ। पहले सिर्फ पोएटेस थी, फिर शायरा भी बनी, फिर ऑथर भी बनी। ऑथर मैंने आपको जैसे बताया मेरा खुद का पुस्तक नहीं है, बट एंथोलॉजीज बहुत सारे हैं। आप लोग जानते हो एंथोलॉजी क्या होता है? एनीवन? नो? सो एंथोलॉजी ये होता है, एंथोलॉजी भी एक बुक होता है जिसमें बहुत सारी पोएट्रीज स्टोरीज अवेलेबल रहती हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक लेखक की, एक राइटर की मौजूद नहीं रहती। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लेखकों की मिलाकर जिनकी जिनकी इंटरेस्ट सेम रहती है। मतलब अगर आप ले लो कि नेचर के बारे में बुक है, तो सारे राइटर्स के पोएट्स जो रहेंगे वो नेचर से रिलेटेड रहेंगे। तो ऐसे में मेरे करीबन 12-13 एंथोलॉजी पब्लिश हुए हैं, जो कि आपको अमेजन पे अवेलेबल मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ एंथोलॉजीज के, जैसे अल्फाज बाय हार्ट बाय अजयपाल सिंह, ऑयस्टर्स फ्रॉम द सेल बाय जसलीन कौर, अनबीट बाय मुस्कान दाहिया एंड आशीष रंजन, एंड 100 स्प्लेंडेड बॉयज सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड, वो सुनहरा पल और बहुत सारे, ये आपको अमेजन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर पोएट्स भी हो गया, शायरी भी खत्म हो गई, फिर ऑथर भी बन गई, कुछ और बनना था अभी, तो लिरिसिस्ट पे आते हैं। मैं लिरिसिस्ट भी बन गई। अब चौंकी मत, क्योंकि बॉलीवुड तक पहुंची नहीं हूँ, तो छोटे छोटे कदम लिए हैं, इंशाल्लाह आगे पहुंच भी जाऊंगी। मेरे हाल ही में अभी एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है मैं तेरे साथ रहूं, जो कि यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा, और उस चैनल का नाम है म्यूजिक वर्ल्ड। म्यूजिक वर्ल्ड में आपको मैं तेरे साथ रहूं गाना अवेलेबल मिलेगा, आप उसे सुन सकते हैं। उसमें जो वीडियो दिखाया गया है वो हालांकि फिल्म का वीडियो नहीं है, जस्ट द क्लिप्स वर कलेक्टेड एंड इट हैज बीन एडिटेड इनटू अ म्यूजिक वीडियो। लेकिन भगवान करे आगे जाके असली वाला जो एक्टर एक्ट्रेस वहाँ पे है उनके लिए भी मैं गाना लिखूँ। और तो बस ये रहा। और उस गाने को को कंपोज भी मैंने किया है। कंपोजर दूसरे हैं, फिर को कंपोज करके भी मैंने दिया था, तो गाने का लिरिसिस्ट एंड को कंपोजर मैं हूँ। और 4 से 5 गाने लाइंड अप है जो कि हिंदी में है और बहुत जल्द आने वाले हैं, और 2 गाने ओडिया में भी आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। एक का काम खत्म हो गया है, बस आना बाकी है, और एक पे काम चल रहा है। और फिलहाल अभी पंजाबी में लिखने की भी कोशिश चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने अभी सुना होगा आजकल के गाने जिसमें हिंदी और पंजाबी के काफ़ी मिश्रण रहते हैं, और पंजाबी उस हिंदी गाने में थोड़ा शोभा बढ़ाती है उनकी, तो मैंने सोचा क्यों ना पंजाबी भी लिखी जाए, क्यों पीछे रहे हम, आगे देश बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ना चाहिए। तो पंजाबी में लिखना चल रहा है। तो अभी मैंने जो कविता लिखी है उसमें से मेरी एक पसंदीदा कविता है, जिसके अंत में आपको
आपको एक सवाल मिलेगा और आपको उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो उस कविता का शीर्षक है पहचान कौन है। ध्यान से सुनेंगे। किसी के जहन से निकला हुआ कोई ख्याल बन जाता हूँ, किसी के जहन से निकला हुआ कोई ख्याल बन जाता हूँ, बेवक्त आने वाली कोई बरसात बन जाता हूँ। नहीं है मेरा कोई पता कोई ठिकाना यहाँ, मैं समंदर किनारे में भी एक घर बन जाता हूँ। किसी अजनबी के लिए एक दोस्त मुसाफिर बन जाता हूँ, किसी के गम से लिपटे दर्द का मैं एक सुकून सा मरहम बन जाता हूँ। फिर भी लोग मुझसे मोहब्बत जताते नहीं हैं, पर आदत से मजबूर मैं हर किसी को मोहब्बत जताता हूँ। जहाँ बस जाऊँ उसे स्वर्ग और जिंदगी मान जाता हूँ, किसी से शिकायत नहीं करता, मैं ऐसे ही सब कुछ नज़रअंदाज कर जाता हूँ। सब पराया समझते हैं, सब पराया समझते हैं, मगर सबको अपना मानता हूँ मैं, सबको बिन मांगे सब कुछ देता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? यानी कैसे किसी को कुछ आइडिया बताओ? होता है स्कूल टाइम में ऐसे होता है, पहले कौन हाथ उठाएगा? बताओ बताओ। हाँ किताब? नहीं किताब नहीं है। हाँ हाँ नहीं कविता नहीं है। थोड़ा डिटेल में जाओ, थोड़ा डिटेल में। हाँ क्या? गॉड नहीं। कोई और? हाँ हाँ करेक्ट क्या? पेड़? क्या बोल रही हो? ट्री ना? करेक्ट आंसर यही है। तो पेड़ है इसका आंसर। जब आप इस कविता को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पेड़ क्यों है, ठीक है। समंदर किनारे पे वो घर बन जाता है, उससे कोई प्यार नहीं करते, ठीक है। पेड़ काटने के लिए हर कोई तैयार रहता है, पेड़ बचाने के लिए बहुत कम आगे रहते हैं, लेकिन वो हमें देने में कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, ना ही लोभ दिखाता कि मैं अपनी चीज़ें दूसरों को क्यों दूँ, ठीक है। तो मेरी कविता में ये सब चीज़ों का मिश्रण हुआ है, तो आखिर में वो एक पेड़ है। तो आगे बढ़ते हुए जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पहले बैठकर जिंदगी की बारीकियों को मैंने समझा था, ठीक है। मैं भी पहले स्टूडेंट थी, वहीं बैठकर मैंने भी सबको सुना हुआ है, सब कुछ जाना हुआ है, सीखा हुआ है, और आज यहाँ खड़े होकर आपको कुछ बारीकियाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद D.A.V पब्लिक स्कूल का। तो सफ़र थोड़ा सा लंबा रहा, पर जैसा भी रहा बहुत खास रहा। ऑफकोर्स उसमें मेरी मेहनत और एफर्ट शामिल थी, मगर मेरे दोस्तों का हाथ था, मेरे परिवार वालों का साथ था, और D.A.V के हर टीचर्स का आशीर्वाद मेरे पास था। इसलिए मैं इतनी आगे बढ़ के आपके सामने खड़ी हूँ आज। तो मैं एक और कविता अपनी सुनाना चाहूँगी आपसे, जो कि एक लेखक के बारे में है। कितना मुश्किल है, इसका शीर्षक है कितना मुश्किल है। सिर्फ एक कवि जानता है कि जज्बात को अल्फाज में सजाना कितना मुश्किल है। आते हुए अश्कों को आंखों से लिखी हुई नज़्म का असर बताना कितना मुश्किल है। जो बात कभी कभी कांटा बनकर चुभती है, उसे यूँ सरेआम बताना कितना मुश्किल है। जख्मों को सीने में गहरा लगाकर भी हंसता हुआ चेहरा नकाब की तरह दिखाना कितना मुश्किल है। हर एक जज्बात के लिए एक शायरी बनाना कितना मुश्किल है। जो जुबान खामोश रहता है उसके लिए आवाज़ बनना कितना मुश्किल है। जहाँ शस्त्र हार मान जाए वहाँ कलम को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। एक लेखक से पूछो, लोगों की जिल्लत को नज़रअंदाज करना, आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। तो जाने से पहले इतना कहकर मैं अलविदा लेना चाहूँगी कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं या फिर लेखक हैं तो ये दुनिया को बताने में संकोच ना करें, ठीक है। एक लेखक की जो पोजीशन रहती है, जो स्टेटस रहती है ना सोसाइटी में, वो सबसे ज़्यादा रहती है। हालांकि लोगों को ये बात पता नहीं है, ठीक है। तो उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, गौर से सुनिएगा। जब तक एक लेखक पन्नों पर लिखेगा नहीं, तब तक इस दुनिया को पढ़ने के लिए कुछ भी मिलेगा नहीं। तो आशा करती हूँ मेरे शब्द आपके लिए मात्र शब्द नहीं बल्कि उम्मीद की किरण बने और आपकी ज़िंदगी सूरज की किरणों की तरह ही
धन्यवाद। वाह, बढ़िया बढ़िया, हमें यहाँ पर गर्व हो रहा है। बच्चों, आज आपने देखा कि आपके सामने जो विद्यार्थी है वो आपके समान ही साधारण एक विद्यार्थी थी, परंतु उसकी कोशिश ने आज उसे इस बुलंदियों तक पहुंचाया है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कविता, नाटक, कहानी जो भी है वो लिखते रहना चाहिए, और चाहे वो सफलता मिले या असफलता मिले, उस पर लिखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? हाँ, तो सिस्टर जो गाना बोलिए। तो मेरा लिखा हुआ पहला गाना है, ध्यान से सुनना। ना इत्तेफाक था तुम्हारा मेरा मिलना, तुमको देखते ही दिल का मेरा खिलना। ना इत्तेफाक था तुम्हारा मेरा मिलना, तुमको देखते ही दिल का मेरा खिलना। अब इश्क का फितूर चढ़ा है, दिल तेरे यहाँ कौन मेरा है, साथ हो तुम तो जिंदगी है, दिल तेरे यहाँ कौन मेरा है।
मैं आप सबको बताना चाहूँगी मेरा लिखा हुआ पहला गाना है और वो कंपोज भी मैंने किया है। लिरिक्स मतलब आप समझते हो जो गाने के बोल रहते हैं वो मेरा है, और कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि उस बोल को किस तरह से दुनिया को बताना है, उसमें वो कॉम्पोजिशन यानी कि मैंने आधा पार्ट उसका कंपोज किया, आधा जिन्होंने पब्लिश किया है उन्होंने कंपोज किया है। और इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो कोई फिल्म नहीं है, बस फिल्म से लिया गया कुछ क्लिप्स है जिसको एडिट करके म्यूजिक वीडियो बनाया जाता है। लेकिन ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोस अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं, मे बी विदिन 2 मंथ्स रिलीज होने वाले हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए होपफुली बॉलीवुड में भी गाने लिखूँ हैं, तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा इस बार। चलिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। सफलता की बुलंदियों को और भी ज्यादा छुओ, आपके सामने हमेशा झुका करके आपके सामने खड़ा रहे, वो भी दिन हमें देखने के लिए मंजूर है। अब बुलंदियों तक छुओ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब यहाँ पर कोई पंक्तियाँ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे आज के दिवस का मुख्य कार्य जो है वो संपादित करने के लिए कोई बाहर से हमने कोई अतिथि को स्वागत नहीं किया है, बल्कि हमारे विद्यालय में ज्ञान के भंडार हिंदी भवन के संचालक स्वयं एक कविता है, जिनके लिए मैं अगर कविता की कोई पंक्ति कहूँ तो बड़ी छोटी को बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए भवानी सर से मैं अनुरोध करती हूँ उनके परिचय को और ज्यादा ना बताते हुए बताऊंगी, बल्कि वो मंच पर आए और स्वयं अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन करें आपके सामने, और आपको कहानी किस तरह से लिखा जाए। कहानी कहा जाता है मुंह से बोल करके, लिख करके हम अपनी परंपरा को आने वाली पीढ़ी को हम समर्पित करते हैं। हमने जो कुछ अनुभव किया है, जो हमारे माता पिता और दादा दादियों ने अनुभव किया, उन्होंने जो कुछ हमें कहा है, उसी को हमारी परंपरा की देन है। और वो परंपरा हम कब पहुंचाते हैं? बोल करके या लिख करके। तो कहानी हम किस तरह से लिखें, अपने भावों की अभिव्यक्ति लेखनी के माध्यम से कैसे करें, बोल करके कैसे करें, ये सारे आयाम हमारे सामने रखने आ रहे हैं हमारे आदरणीय सच्चे मित्र साथी जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। भवानी सर का मैं स्वागत करती हूँ। आदमी को आदमी बनाने के लिए प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। हमारे सम्मानित प्राचार्य और सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सबका स्वागत है इस साहित्यिक संगोष्ठी में। मेरे नहीं कि गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ, इसके 2 बात है, जिनमें दर्द न हो और प्यार न हो वो लेखक बन ही नहीं सकता। इसीलिए 2 चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों के दर्द को समझना और प्यार के माध्यम से उनको सजाना संवारना उनका काम है। लेकिन आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप कहानी पर बोलिए। कहानी पर बोलना, सुनना और सुनाना, समझाना बड़ी मुश्किल की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, आप बचपन से कहानी सुनते आ रहे हो। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहा नानी। क्या है बोलिएगा, क्योंकि ये भाषण देने नहीं आया हूँ, कुछ बस सिखाने के लिए हमें ये जो कहा गया ना, आपको सिखाना। भाषण तो बाद में होगा। क्या कहा गया? कहानी का अर्थ कह नानी। सभी बोलेंगे कह, यानी नानी जो कहा करती थी वो सभी कहानी होती थी। आज नानी की कहानी गायब है और तुम कहानी कैसे सीखोगे? कह, फिर भी कहानी आज भी जिंदा है, कल थी और आगे रहेगी। मैं कहानीकार कब बना मुझे तो याद नहीं, लेकिन एक बात ये, स्कूल में मुझे जो वातावरण, बच्चों के वातावरण से
मुझे कहानी लेखक बनाने का एक मौका दिया, अवसर दिया। मैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जिसे कथा सम्राट कहा जाता है, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं कहानी लिखने के लिए बस कोशिश करता रहा। आखिरकार कहानी लिखा। मेरे क्लास में बच्चे अपनी अपनी समस्या लेकर के हमारे सामने आते हैं और उसी समय कुछ बच्चे ऐसे हैं, वितर्क के समय, बहस के समय वो अपनी बात कह जाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक अवसर वैसा मिला, मैं पहले वो कहानी सुनाता हूँ। हम भी यानी आप भी अपने माँ बाप, भाई बहन, अग्रज अनुज किसी की भी पूरी लत, पूरे अभ्यास को आप छुड़वा सकते हैं। कारण आप में वो दम है, क्या है? प्यार है, ठीक है। उसी प्यार के माध्यम से आप बदल सकते हो। उसी प्रकार एक घटना को मैं कहानी का रूप दिया है, बेटी का प्रण। क्या है वो? जो बेटियां यहाँ बात कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, और जो बेटे भी ध्यान से सुन रहे हैं, वो बेटियों को यानी अपने बहनों को प्यार बांटे, क्योंकि माँ बाप को बदलने का काम ज्यादा बेटियां करती है, मुझे नजर आती है लेखक के रूप में। आप भी बदलते हो। खैर, घटना क्या थी? एक मैं पिछले 22 साल से क्लास टीचर हूँ, तो मुझे लड़की ने बताया पापा गुटखा खाते हैं, बच्चे अपने चिढ़ाते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म आती है। तो मैं वो वेद पाठशाला हिंदी पढ़ाने जाता था, वो वहाँ के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उन्हें मुझे किसी कारण उनके घर बुलाया, तो बेटी का दर्द छलक पड़ा। पापा को कितने बोलने से भी वो छोड़ते नहीं, गुटखा खाते हैं, बच्चे हमें चिढ़ाते हैं। और उसी को लेकर के मैंने कहानी शुरू की। तो जो सुनेंगे कहानी का मर्म समझेंगे। मर्म समझते हो? समझते हो तो चलो, मोरल चलो ठीक है। मैं बीच में कुछ नहीं समझाऊंगा, बस पढ़ूंगा और आप समझेंगे, ठीक है। बेटी का प्रण। पापा आप गुटखा क्यों खाते हैं? स्मिता ने पूछा। यही मेरी आदत है बेटी, रमेश बाबू ने सकुचाते हुए कहा। गुटखा खाना बुरा है ना, फिर आप क्यों ये आदत छोड़ नहीं देते? स्मिता ने फिर प्रश्न किया। चाहने पर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ बेटी, रमेश बाबू ने सफाई दी। हमारे स्कूल में सब लोग कहते हैं कि गुटखा खाने और सिगार पीने से कैंसर होता है। स्मिता ने सविनय विरोध किया। रमेश बाबू ने खींच कर कहा, चुप रहो, मुझे पाठ मत पढ़ाना, जा अपना काम कर। स्मिता साहस बटोरते हुए बोली, क्यों, मैंने गलत कहा क्या? आपकी बुरी आदत के कारण हमें शर्म आती है। आज से गुटखा खाना छोड़ दीजिए ना पापा, प्लीज हमारी बात मान लीजिए ना। स्मिता ने समझाने की कोशिश की। रमेश बाबू भड़क उठे और बोले, क्लास में तुम जब कम नंबर लाती हो, मुझे भी शर्म आती है ना। कितनी बार मैंने कहा कि बेटी मन लगा कर पढ़ो, क्या तुम सुनती हो? यह भी तो तुम्हारी एक बुरी आदत है। ठीक है, अगर तुम क्लास में अव्वल आओगे तो मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा। शर्त मंजूर है? मंजूर है पापा। स्मिता ने पूरी दृढ़ता से तुरंत जवाब दिया। त्रैमासिक परीक्षा हुई, उसमें स्मिता दूसरे स्थान पर रही। उसने जो प्रण किया था वो टूटता हुआ नजर आया। उसने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, बस मन ही मन उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि पापा की बुरी आदत छुड़ा कर ही रहूंगा। एक दिन रमेश बाबू ने छुट्टी ली। बिटिया, बुरी आदत छूट नहीं सकती पापा, आदत छूटती नहीं, छोड़ी जाती है या छुड़वाई जाती है। स्मिता ने साल भाव से कहा। सालाना इम्तिहान हुआ, इम्तिहान परीक्षा, सालाना इम्तिहान का परिणाम आया, पर सिर्फ एक अंक के लिए स्मिता अव्वल होने से वंचित रह गई। परीक्षा परिणाम सुनते ही वह रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं हार गई।
पापा की बुरी आदत और छुड़ा नहीं पाऊंगी। पास खड़े रमेश बाबू की आंखों से आंसू लरचने लगे। शायद वे बेटी के हृदय की पीड़ा को आप समझ चुके थे। तुरंत स्मिता को गले से लगाया और प्यार से कहा, रो मत बेटी, रो मत बेटी, आज से मैं और कभी गुस्सा नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही स्मिता की होठों पर मधुर मुस्कान अठेलियां लेने लगी। उसने सोचा आखिरकार अपना प्रण तो रंग लाया। तो आपको ये कहने की मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि आदमी को खुशी की खबर चाहिए। आज उनके पापा मुझे छोड़ दिया है, तो तालियां उनके लिए, उस बच्ची के लिए, ये कहानी के लिए, उस बच्ची के लिए। और उतना नहीं, उसके पिताजी व्यापार में थे। किसी बच्चे ने चिढ़ा दिया, हमारे पिताजी बड़े बड़े अफसर हैं, आपके पिताजी व्यापार करते हैं, ऐसे उनके काम में आया। तो पापा तभी बीटेक किए हुए थे। दोनों बेटियों ने कहा पापा आपको आगे बढ़ना है, और पापा इसी लिस्ट में एमटेक किया और आज एक बड़े ये इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापक है। तो बच्चों आपसे उतनी ताकत है, आप बदल सकते हो। और आप इन कहानियों को लिखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उनकी जो उस बेटी की कोशिश है, प्रयास है, उसके जरिए आप तक ये कहानियां पहुंचाना, जिससे हो सकता है आपकी कोशिश से आपके घर की समस्याएं समाधान हो सके। कथा कहना केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनुष्य को बदलने के लिए, कथा मनुष्य की व्यथा को घटाने के लिए। और साथ में कहा कह दिया, और ये अनंत काल से है, जब तक लेखक नहीं रहेगा समाज नहीं सुधरेगा। छोटी छोटी घटनाएं आप डायरी लिखते हो, डायरी में भी बड़ी बड़ी घटनाएं लिखी जाती है और आगे चल करके वो इतिहास बनता है और वो स्वर्णिम अक्षर में पैदा होता है। कुछ टिप्स आपके लिए, क्या करना है लेखक बनने के लिए। लेखक बनने के लिए आपको 5 बातें याद रखनी, 5 बातें। क्या साहब ने कुछ कहा, मैं उससे जोड़ देता हूं। फिर पहला, हमारे आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। लेखक बनने के लिए हमें क्या चाहिए? चाहिए ये उत्कृष्ट साहित्य पढ़ना, केवल अपनी किताबें नहीं, बड़े से बड़े लेखकों की कहानियां, कविताएं, उपन्यास, नाटक, कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें भाषा में पकड़ आएगी और साथ ही साथ विचार, आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। दूसरा, लेखकीय दृष्टि रखना। क्या है? लेखकीय दृष्टि, क्योंकि जो बात दूसरे देखते हैं लेकिन उसे नजरअंदाज करते हैं, हम देखते ही, यानी एक लेखक देखते ही उसमें एक नई चीज ढूंढता है। ठीक है, तो लेखकीय दृष्टि रखना। तीसरा, समाज में और व्यक्ति में, परिवार में भी हो सकता है, जीवन में घट रही घटनाओं पर गौर से मनन चिंतन करना होगा। क्या ये सही है, क्या सही नहीं है। ठीक है। और चौथा, कथानक जो है पकड़ना। कथानक कहाँ से चुनोगे आप? कहोगे कहाँ से हम ऐसे कहानियां ढूंढेंगे, विषय वस्तु चुनेंगे, कंटेंट चुनेंगे हर वक्त, क्योंकि जीवन एक समस्या का पुलिंदा है कि नहीं। और उसे कहा गया है असार मध्य सार संसार, सेठे असार अच्छी सार अच्छी। तेणु आपको चुनना पड़ेगा कौन सी घटना है। इसके लिए आप जितनी अखबारें पढ़ सकते हो पढ़ोगे तो वैसे आपको क्या मिलेगी? कथानक यानी कथा वस्तु कंटेंट मिल जाएगी। और आखिरकार जब पढ़ोगे भाषा में आएगा सुधार, जिसे कहते हैं भाषा को संवारना, पॉलिश करना।
आप देख रहे हो आपके विद्यार्थी, आपकी बहन यहाँ पे जो भाषण दे रही थी, कितने सुंदर तरीके से, क्या प्रवाह है, क्या भाषा की पकड़ है, क्या शब्द के जो निरंतर एक प्रवाह जो कभी कटती नहीं, छटती नहीं, रुकती नहीं, कैसे आ गया? क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि तलाश करना है, तलाश करोगे तो चमकोगे। ये 5 बात है। अच्छा, साहित्य में केवल कहानी का ही महत्व नहीं, साहित्य में कविताओं का भी महत्व है। उन्होंने जैसे लिखा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। विशेष रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा और आपकी रुचि के अनुसार उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं गजल कभी नहीं लिखता था, उसके जो ये जो कविता है, गीत है, मुझे गजल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की सजाया गया है उसे देख करके, क्योंकि 2 प्रकार के मेघ की तरह गजल लिखे जाते हैं। एक नियम है, छंद है, उसी छंद में लिखे जाते हैं। तो छंद लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप सूत्र याद करते हो, सूत्र भी हमें याद करना पड़ता है। खैर जो भी हो, गजलकार बनने के लिए या किसी भी साहित्य बनने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है। एक दूसरी बात है, बहुत सारी किताबें मिल रही हैं। मुझे एक किताब मिली गजल निर्देशिका, जिससे मुझे लिखने का एक माध्यम मिल गया। और 90 साल की, लगभग 90 साल की एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कांपते हाथों से कि भाई आप बढ़िया लिखो। भले मैंने बढ़िया नहीं लिखा, उन्होंने रेखांकित करके दिया, आप बहुत बढ़िया लिखते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कोशिश करो ये नियम को बदल दो, हो जाएगा। लेकिन मैंने जब गजल शंकर निकाला तो उसी समय वो इस दुनिया में नहीं थे। ये दुख की बात है। खैर, मैं कह रहा था कि जितने गीत सुनते हो आप फिल्मों में, सारे के सारे राइटर यानी कवि लोग होते हैं। उन्होंने कहा ना, कवियों को कौन जानता है, लेखकों को कौन जानता है, क्या डायलॉग है, क्या संवाद है, क्या गीत है, सभी लिखने वाले जो है वो पीछे है। लेकिन जितना आनंद देते हैं कवि लोग, और कोई देगा नहीं आपको। आप गुनगुनाते हो तो कवियों के शब्द, ठीक है। तो आपको लिखना पढ़ना अगर है, मैडम ने तो कहा हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब से मैंने लिखना शुरू किया, सच में दिल की बात बता रहा हूँ, मैं एक बार पहले की प्रिंसिपल मैडम से कहा था, और लेकिन संभव नहीं हो पाया। अभी खैर जो भी हो, मन की मुरादें पूरी हो रही है और जितने दिन हैं हम कोशिश करेंगे। ये जरूरी है, भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। जैसे प्रज्ञा में लिखते थे, उसी दिन मैंने कहा प्रज्ञा तुम ये तुम नहीं लिख रहे हो, या तो निकाल देती हो कहीं से या किसी की है। कहा सर नहीं लिख रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये शब्द तो तुम्हारे हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ मैं ही लिख रही थी सर उसी समय। अभी भी कुछ बच्चे आपके सामने आएंगे और मैं बता देता हूँ, अनुस्मिता उन्होंने मुझे एक कविता दी, मैंने पढ़ते ही कहा ये छप जाएगी आपकी, और भेज दिया। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पत्रिका, जिसमें उसकी छपी है महाराष्ट्र वर्धा से, पहली ही उसकी छपी है। तो उसको मैं आपके सबके सामने बधाई देता हूँ कि उन्होंने शुरुआत बहुत शानदार ढंग से किया है। और दूसरे जो आपके सामने आएंगे रूप होंगे, स्मृति आचार्य, वो भी खूब बहुत बढ़िया लिखती है। 4-5 बच्चे बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। ये अनुस्मिता जी आपकी बड़ी बहन जो मुझे 10th क्लास में दी थी वो कविता, वो छप चुकी है। और उसी में कोई मैंने कुछ एडिट, मतलब एक जगह जो ठीक पेट का नहीं था, उसी कविता में 2 लाइन उसको कॉन्सेप्ट करके भेज दिया। बाकी हिंदी की जो मात्राएं, जो व्याकरण, सब भी बिल्कुल ठीक ठाक था, वो छप गई एक में। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अगर
मेरी भी वैसी एक कविता छपी थी, लेकिन 30 साल की उम्र में, लेकिन वो 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में वो, इसीलिए ये बहुत बड़ी संभावना है। कल मुझे एक परसों एक मुझे सभी टीचर जानते हैं, बच्चे भी जानते होंगे, शायद आप जानते होंगे, मैं अपने क्लास में तो कविता सुनाता ही और बच्चों को कहता लिखो। लेकिन एक कुछ ने कहा, मैंने कहा कि आप में प्रतिभा है, कोशिश करो। एक ने मुझे पूछा हम में प्रतिभा है, हम कैसे जाने? बड़ा प्रश्न है। मैं थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन उसने एक कविता लिखी दी थी। मैंने कहा आपने कविता लिखी दी थी ना? ना, हाँ जी। तो अभी कलम पकड़ी थी, अभी थाम लिया? अरे अभी रख लिया आपने? निरंतर चलो। आपको और एक बात बता दूं, क्योंकि ये कॉन्क्लेव शुरू हुआ, तो ये 2-3 साल में मैडम से मैं अनुमति ले रहा हूँ। हमारे भारत सरकार बनाते नव लेखन शिविर, पूरा पैसा देती है भारत सरकार कवियों को, आने जाने खाने पीने रहने सभी, केवल ठहरने की व्यवस्था हमें करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैडम अगले उनके कार्यकाल के बीच एक कार्यक्रम हम कम से कम करेंगे और उसी में हमारे विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। 8 दिन का कार्यक्रम होता है, साहित्य की हर विधा पर चर्चा होती है, लेखन होता है और सिखाया जाता है। भारत के प्रतिष्ठित लेखक आते हैं। मैं जब गया था हरिद्वार में, अभी साहित्य अकादमी उसे बोलते हैं, सबसे साहित्य के शिखर अनुष्ठान है भारत सरकार में। वहां पे एक है उनका सचिव, सेक्रेटरी, उनको हमने हरिद्वार में सुना था। आदमी इतना सादा सीधा, लेकिन क्या गजब की गजल लिखते हैं। तो हमसे वहीं से प्रेरणा मिली। आज जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वैसे 2-4 बार हमने पहुंचे वहां और सीख के आए। आपके लिए भी वो अवसर आएगा, वो ना सही हर 2-3 महीने में हम एक कार्यशाला करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कविता की तरफ चलते चलते 2 बात, आप कविता किसी भी घटना पर लिख सकते हो। मैं आज दूसरी कविता नहीं सुनाऊंगा, बच्चों पर जो लिखी गई कविताएं हैं आपको सुनाऊंगा। हमारे बच्चों की समस्या, हमारे घर की समस्या, लेकिन मैं अपने घर की एक समस्या आपको कहानी के माध्यम से सुना रहा हूं, उसके बाद आपको कविता सुनाऊंगा। निरुत्तर बच्चे, छोटे बच्चे, 5-7 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पेरेंट्स ना नहीं जाएंगे, पापा मना करते, मामा मना करते नहीं। तो मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ, छोटी सी कहानी, इसे कहते हैं लघु कथा। आप बड़ी बड़ी कथा मत लिखो, छोटे छोटे कथाएं लिखो और उसमें भी दम आएगा। लिखी, भेजा, छप गए। तो कहानी कैसी है आप सुनो, ध्यान से सुनो तो समझो। देखो क्या, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सोच रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ये किसके बीच में बातें बता देता हूँ। नाना जी नाना जी, ठीक है, और नाती, ठीक है। तो नाना जी मुझे अपने दोस्त के घर में छोड़ाएंगे क्या? 4.5 साल का नाती आयुष ने शैलेंद्र बाबू से पूछा, नाना जी मुझे अपने दोस्त के घर छोड़ाएंगे क्या? 4.5 साल का नाती आयुष ने शैलेंद्र बाबू से पूछा। अरे मामू जी ने मना किया है ना, कल इतवार है, जाओगे? शैलेंद्र बाबू ने आयुष को सपने की समझाते हुए कहा, आप मुझे छोड़ देंगे या नहीं? आयुष ने पूछा, नहीं, मामू मुझे रखेगा क्या, मार डालेगा? शैलेंद्र बाबू ने बहाना बनाते हुए कहा, आप उनकी बाबूजी है ना, आप उनकी बाबूजी है ना, फिर वे आपको मार कैसे देंगे? अचरज होकर आयुष ने पूछा,
निश्चल भाव मन से निकले इस प्रश्न ने नाना शैलेंद्र जी को एकदम निरंतर कर दिया। ये कुछ कहे भी ना, मुस्कुरा कर वो उनसे चल दिए। ठीक है, आपकी कथा है। छोटा सा बच्चा ऐसा पूछता है, ये प्रश्न का सार क्या है? जो प्रश्न है, नहीं मामू रखेगा क्या, मार डालेगा। मामू उसके पापा को मार डाले, वो खुद प्रश्न पूछ रहा है ना, आप उनके बाबूजी है ना, आपण तंकर पापा ना, पापा को मामू मार दे, वो मार दो। छोटा पिला कितने प्रश्न बोला, उनको चक्कर आ गया। तो समझ में ये कहानी का सार है, और इसको पकड़ करके आप कहानी बना सकते हैं। समझ में आया? कुछ लिखने का प्रयास करोगे, छोटी छोटी कहानी बनाओ और अंत में 2-4 छोटी छोटी कविताओं के साथ पूरा करेंगे। आपके पहले हमें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। किसे अच्छा लगता था? किसे अच्छा लगता था स्कूल जाना? स्कूल जाना आधे बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए समर्पित है कविता, उनके लिए समर्पित है। स्कूल जाना अब अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है। नहीं, बचपन में अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लगता। तो वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, जरा सुनिएगा, सुनो। कविता अगर अच्छी लगी, कहानी अगर अच्छी लगी तो तालियां जरा देना, नहीं तो मैं यहाँ पे पसीने से तरबतर हो रहा हूँ और आप वहाँ पे बात गोली गप्पो। ठीक है, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपकी बात है, मेरी नहीं है। जब मैं छोटा था ना, तभी खेल में मस्त था। हाँ? जब मैं पहले पैर स्कूल जाया करता था, जब मैं पहले पैर स्कूल जाया करता था, रो कर मैं बेहोश हो जाया करता। जब मैं पहले स्कूल जाया करता था, रो कर मैं बेहोश हो जाया करता था। माँ समझाती, बापू भी समझाते थे। माँ समझाती, बापू भी समझाते थे। दादा सवेरे मुझको स्कूल छोड़ाते थे। धीरे धीरे स्कूल जाना भी मैं सीख गया। धीरे धीरे स्कूल जाना भी मैं सीख गया। रोना छोड़ मैं गीत गाना भी सीख गया। रोना छोड़ मैं गीत गाना भी सीख गया। नए नए कितने नन्हे मुझे दोस्त मिले। नए नए कितने नन्हे मुझे दोस्त मिले। गीत सिखाने वाली प्यारी मैम और सर मिले। गीत सिखाने वाली प्यारी मैम और सर मिले। अक्षर सीखा, भाषा सीखी। अक्षर सीखा, भाषा सीखी। लिखना पढ़ना सीख गया। खेल कूद भी कितने सीखे। खूब नाचना सीख गया। आज मुझे तो सबसे अच्छा स्कूल जाना ही लगता है। हंस पड़ता हूँ जब स्कूल जाने का पहला दिन याद आता। और अंतिम लाइन, अब मुझे आता रोना। पहले आता था जाने के लिए, पहले स्कूल जाने के लिए रोना आता था। अब मुझे आता रोना जिस दिन स्कूल नहीं मैं जाता हूँ। अब मुझे आता रोना जिस दिन स्कूल नहीं मैं जाता हूँ। घर में रहकर अब मुझे लगता हर पल कुछ भी खोता हूँ। ठीक है, माँ पर बड़ी बातें माँ पर बहुत लिखी जाती है। निश्चित रूप से माँ ईश्वर की बात नहीं, ईश्वर से पहले माँ का जगह है, साक्षात ईश्वर है। किसी ने ईश्वर को देखा है? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। किसी ने ईश्वर को देखा हो? हमारे क्या कोई? अरे किसने? कैसे? जरा ध्यान दो, शब्द पर ध्यान दो। हम ईश्वर का दूसरा नाम कहते हैं सृष्टिकर्ता। क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता। यानी हमें जो जन्म देता है, सृष्टिकर्ता, पैदा करता है। हमने किसी ईश्वर को देखा नहीं पैदा करते हुए, सिवाय मां को।
सिवाय माँ को हमने किसी सृष्टिकर्ता को देखा ही नहीं, इसलिए भगवान राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, ईसा ने, सबने अपने माँ को कहा मुझसे तुम बड़ी हो माँ। तो उसी माँ के ऊपर मारो नहीं माँ, माँ पीट ले। हमारे घर में हम भी देखते सुनो नहीं रे ना मैडम तो सीखते ना कि पहले कौन होते मारो नहीं माँ, बच्चे बन जाओ और छोटे बच्चे बन जाओ। मारो नहीं माँ, मुझे न मारो, छोटा सा मैं बच्चा हूँ। मारो नहीं माँ, मुझे न मारो, छोटा सा मैं बच्चा हूँ। खेलना कूदना स्वभाव मेरा, खेलना कूदना स्वभाव मेरा, दिमाग में कच्चा हूँ, शरारत तो करता हूँ, शरारत तो करता हूँ, बच्चा हूँ मैं बच्चा हूँ, बनूंगा एक दिन अच्छा इंसान, अब भले मैं बच्चा हूँ। मारो नहीं मुझे माँ प्यार दो, मारो नहीं माँ मुझे प्यार दो, सिखा सिखा कर मुझे निखार दो। मारो नहीं मुझे माँ प्यार दो, सिखा सिखा कर मुझे निखार दो। जिससे बन सकता ऐसा बंदा हूँ, जिससे बन सकता ऐसा बंदा हूँ। तेरी आंखों का मैं चंदा हूँ, तेरी आंखों का मैं चंदा हूँ। और सुनेगा या उठ गए, और सुनोगे या उठ गए, सुनेंगे। अच्छा, बच्चे और फूल, आप कविता की, मैं ये कविता सुना रहा हूँ, इसके साथ साथ दो बात बता रहा हूँ। आप कैसे लिखोगे, कंटेंट कहाँ से चुनोगे। मैंने चुना फूल जैसे बच्चे वैसे। ये कविता छपी ये मैं एक बालवाड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार की पत्रिका है बच्चों के लिए, उसी में छपी है। आप भी छपवा सकते हो अगर कविता लिखोगे। तो मैंने कंपेयर किया, तुलना की, जरा सुनिए। सुमन वो बच्चे एक समान, सुमन का मतलब फूल, तो सुमन वो बच्चे एक समान, दोनों की सुंदर है मुस्कान। नहीं, सुमन हुए बच्चे एक समान, दोनों की सुंदर है मुस्कान, दोनों को मनोहर है प्यारे, सबसे सुंदर सबसे न्यारे, बड़े मनोहर इनके रूप, दोनों ईश्वर के हैं प्रतिरूप। सबकी आंखों के वे तारे, सबके दुख पर हर लेते सारे, निश्चल निर्मल इनके अंदर बिखराते हैं गंध निरंतर। सबको अपना मान कर चलते, कभी किसी से वैर न करते, यह संदेश देते हैं हमको, खुशी बांटना पीड़ित जग को, सबको मित्र बनाते रहना, गीत खुशी से गाते रहना। ठीक है, खत्म करें अभी सर। एक छोटा सा एक छोटी सी गीत के साथ खत्म करूंगा। मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इंसान जरूर बनूंगा। हम पूछते हैं आप क्या बनोगे बच्चों को, तो उसी के साथ खत्म करेंगे। गुरुजी ने पूछा बच्चों प्यारे, गुरुजी ने पूछा बच्चों प्यारे, जीवन के हैं क्या लक्ष्य तुम्हारे। गुरुजी ने पूछा बच्चों प्यारे, जीवन के हैं क्या लक्ष्य तुम्हारे। कान्हा बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, कान्हा बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, दीन जनों की रोज सेवा करूंगा। विनम्रता से कहा श्याम ने गुरुजी, चाहे मेरी बनूं नेताजी। अलग अलग सबने लक्ष्य बनाए बैठा था, लेकिन ओम शर्माए। गुरु ने कहा ओम तुमने कुछ नहीं कहा, क्या जीवन का तुम्हारा कोई लक्ष्य न रहा। सकुचाते हुए ओम बोला होकर खड़ा, बनना नहीं मुझे कभी छोटा या बड़ा, कुछ बनो या न बनो मगर यही कहूंगा, एक दिन एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा, एक दिन एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। साहित्य आपको इंसान बनाता है, और साहित्य के जरिए आप हैवानों को
इंसान बनाते हो। इसीलिए साहित्य रचना और साहित्य पढ़ना हमारा प्रथम और सर्वोत्तम कर्तव्य होना चाहिए। इसी आशा के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। बच्चों, सर को चाहे कहीं भी दी जाए, कहानी दी जाए, नाटक दी जाए, उपन्यास दी जाए, तो मोड़म के तो वो कविता के अंदर ही आती है और कविता के माध्यम से वो आप लोग वही विधा को बड़ी आसानी से समझा देते हैं। कहानी किस तरह से लिखोगे? विषय वस्तु को लेना है, शब्दों को चुनना है, भाषा को देना है, भाव को उसमें पिरोना है और तभी जाके आपकी कहानी बनती है। और सर ने इस तरह से आपको 2-3 कहानियां सुनाई, कविताएं सुनाई, उस पर विचार करना और स्वयं लिखने की कोशिश करना। धन्यवाद भवानी सर जी, आपने हमारे बच्चों को कहानी लिखने, कविता लिखने, कहानी के माध्यम से आपने हर विधा को बता दिया कि किस तरह से लिखना है। बच्चे हमारे जरूर कोशिश करेंगे, है ना बेटे? सब लोग कोशिश करोगे और हम कहानी लिखेंगे, है ना? कहानी के साथ साथ कविता भी लिखेंगे। धन्यवाद सर। आज हम जो भी कार्यक्रम करते हैं या विद्यालय में जैसी भी कोशिश की जाती है, उसके पीछे सबसे अच्छा उद्देश्य यही होता है कि हमारे विद्यार्थी हमारे इस उद्देश्य को पूरा करें। अब हमारी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे बढ़कर के जो हमें छोड़ करके चली गई है और समाज का एक मुख्य अंग बन चुकी है, एक तरफ ये विद्यार्थी हैं और दूसरी तरफ हमारे और भी विद्यार्थी हैं जो अब भी हमारी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, परंतु उनमें भी आज के दिवस की प्रतिभा जो है वो उनके अंदर छिपी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखें, जैसे सर ने कहा। अनुस्मिता, मंच पर आइए और अपनी कविता सुनाइए। वो देशभक्ति की कविता है। देश के लिए एक इंसान के अंदर कौन से कर्तव्य होने चाहिए और किस व्यक्ति को हम देशभक्त कह सकते हैं और देश के लिए उसमें मर मिटने की कितनी चाहत है, उसकी कविता का मुख्य मर्म है। अनुष्का, आओ। धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानाचार्य एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन। भारत हमारा देश है। हमारी जन्मभूमि के प्रति हमारे अनेक कर्तव्य हैं। आज के विद्यार्थी इस देश के भविष्य के नागरिक हैं। इसी कारण आज के युवा वर्ग में देशभक्ति का भाव जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं अनुष्मिता मानिग्राही, कक्षा 11वीं की छात्रा, आज अपने द्वारा लिखित एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसा मेरा हिंदुस्तान। इस जहां में ना कोई ऐसा देश, विभिन्न हो जिसकी सुगंध और परिवेश। आजादी का त्योहार आज मनाता है जो प्रदेश, वह है मेरा भारत, मेरा स्वदेश। इस मिट्टी की सुरक्षा हेतु वीरों ने दिए अपने प्राण। यह मिट्टी है उन वीरों की देन, निहित है इसमें उनके बलिदान। आग सी जलती है सीने में, सुनते ही साहस और निर्भयता के गान। उन्हीं वीरों की शहादत के बदौलत पाया है हमने अपनी पहचान। सभी धर्मों व लोगों की एकता है इस देश की शक्ति को अभिमान। सभी धर्मों व लोगों की एकता है इस देश की शक्ति को अभिमान। आज भी हर भारतीय गर्व से कहता, मेरा हिंदुस्तान मेरी शान। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता लिखी है। हमारी दूसरी छात्रा है स्मृति सोयंसी, जिसने अपनी कविता लिखी है मानव अधिकार, जिसका शीर्षक है मानव अधिकार। समाज में हम लोग रहते हैं और हमारे अंदर ऊंच नीच, धनी गरीब, काले बुरे का बहुत सारा भेदभाव है। उन भेदभाव से अगर हम लोग ऊपर उठ जाएं तो समाज हमारे लिए एक स्वर्ग के समान लगने लगेगा। किसी के अंदर किसी प्रकार के बैर भाव नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे ही भाव हैं हमारी दूसरी कविता का, जो पढ़ने आइए स्वागत है। धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानाचार्य जी और उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं स्मृति सोयंसी आचार्य कक्षा 12 से हूँ
और आपके सामने एक कविता पाठ करने वाली हूँ जिसका शीर्षक है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस करते पालन सब, पर दीन दरिद्र का दुख कम होगा कब। बाहर से उच्च दिखलाते अंदर से है नीच, इंसान ही इंसान के अधिकार लेते हैं खींच। सब मानव में एक कहता है संविधान, फिर ऊंच नीच का फर्क क्यों देते हैं हम काम। करना है खत्म हमें इस भेदभाव को, बनाना है सर्वश्रेष्ठ हमें अपने देश को। रोशन करना है हमें अपने देश का नाम, दिलाना है सबको अधिकार। अब है हमारा काम, अब है हमारा काम। श्रुति, धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता है। मानव अधिकार के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं और उसे कामयाब करने के लिए आपकी कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मुख्य रूप से ज़्यादातर जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसके समापन तक पहुंचते पहुंचते हमने उसकी सार को, कुछ भी सार को उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। कुछ किसी दूसरों को सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। और हमारी आज की यह सीख है कि हम अपने साहित्य को आगे बढ़ाएं, साहित्यिक विधाओं को लिखकर, बोलकर, छपवाकर लोगों तक पहुंचाएं। और मैं हमारी आचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि ये अवसर उन्होंने हमें प्रदान किया। केवल हमारे अध्यापकों के लिए भी ये मार्गदर्शक है और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, ताकि हम इसके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को सही रास्ते पर ले जा सकें, उनके अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुँचा सकें। परंतु आज के अंतिम पड़ाव में हम प्रज्ञा को छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। वो भेंट नहीं है, वो हम सारे अध्यापकों का आशीर्वाद है कि तुम और भी आगे बढ़ो। आप आगे, और आचार्य जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे उन्हें अपना भेंट स्वीकार करें। प्रज्ञा सर, मैडम आप धन्यवाद बच्चों, आप हमें सुनने के लिए और तालियां देने के लिए। हाँ, तालियां देते रहे ना। वो दे रही थी माँ, तारीफ होगा सबके लिए। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच कर थोड़ा सा धन्यवाद देने लक्ष्मी मैडम से मैं अनुरोध करती हूँ मंच पर आए और हमारा धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद मीना मैडम। सबको मेरा नमन। बच्चों नमस्ते। सबसे पहले माननीय अध्यापिका महोदया मैडम जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस दिन हमने निर्णय किया कि हम ये साहित्यिक संगोष्ठी करेंगे, मैडम ने हमें बुलाया और कहा कि हम करेंगे। जो कार्यरत हैं वो व्यस्त हैं, तो ये बात जब मैडम के सामने मैंने रखी, नहीं दिनाशी ये करना है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उस दृढ़ता की वजह से हम सक्षम हो पाए। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करना या उसके लिए आयोजन करना इतना आसान नहीं है। हम जितना देखते हैं उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है। तो खास तौर पर सबसे पहले प्रज्ञा, आपने अपना समय दिया और आप अपनी माता जी को लेके आए, बहुत अच्छा लगा। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अतिथि भवानी सर, आपका भी धन्यवाद। दुर्गा सर, छत्रपुर, जैसे ही मैडम ने कहा
कि सर हम यहाँ पे संगोष्ठी मनाएंगे, तो सभी अध्यापकों ने हमारा साथ दिया, आप लोगों का धन्यवाद। और दिलीप सर, दूसरे हिंदी विभाग के, मैं सभी को बता दूं ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद अंग्रेजी है और तत्पश्चात उड़िया भी है। तो इसमें समाहित सभी शिक्षकों के लिए मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे धन्यवाद तो मेरे प्यारे DAV के इन फूलों के लिए, जो सुबह 8 बजे से धैर्य रख बिना कुछ खाए बैठे हुए हैं। धन्यवाद बच्चों, और सबका फिर से धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। Vivekananda says that God is one and we need to take blessings of God. Nothing can move on the earth without the accent of the God. So I request over here Samantha ma'am to please come over and recite a verse. Ma'am, please. Good morning, everyone. How I left you people, counting 25 to 1, sit in the same position. Sit in the same position. Deep breathing. Ready? Though I belong to a science stream, but without literature, nothing can do. Students, we are DAVians. D for Diamond, Anglo, Valley. So we will, of course, appreciate the verses of Veda. So today I am reciting one verse which was given by Adi Shankaracharya from the Conclave Upanishad. So all of you are aware of this verse, very known, very popular. And today I recite and I tell the meaning of that. And why we should recite this mantra always before any meeting, any educational meeting or any whatever you do together. When a teacher and a taught, when a giver and a receiver, when you are two together, then this mantra is highly indispensable. It is highly essential. Once a teacher is teaching, the other one should listen, isn't it? So all of you listen to carefully. Again I tell you to recite with me. The mantra goes like this. Om Sehna Bhavatu Sehna Bhunatu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Baditamastu Ma Vidvesavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Though this mantra was very familiar to me, so yesterday also I did my homework, because when you are reciting a mantra, the pronunciation, because we are in a literary enclave, so the pronunciation should be clear and proper, otherwise there will be a negative impact of that. So the mantra's meaning, it goes like this. Om, as you know, is depicting the whole creator of the universe, the whole God, whoever you say, whether it is Brahma, Vishnu, Maheshwar, Ishu, Buddha, whoever may. Om, Om. Everything, the energy within us. Om.
May the divine protect both teacher and the student. Let us be nourished and protected. May we work together with great energy. May our studies be effective. May we never hate or fight or quarrel with each other. Oh, peace, peace, peace. The first peace is for me, the God within me. The second piece is our surrounding, the nature. And the third, of course, the divinity, the divine force behind the whole creation in this world. Children, another mantra, it was very nice, you see. It goes like this. Ishan Sarva Vidyana, Ishwar Sarva Bhutana, Brahmadipati, Brahmanodipati, Brahma Shiva Asti, Sada Shivoham, Shivoham, Shivoham. Feel the Shiva, feel the energy, feel the Devatva, feel the divine within you. Then you will not do anything wrong, and these mantras will guide you in a right path. Now, I would like to thank B. S. Sunita Madam to give me this opportunity, and people, we are starting with a divine mantra, and all your mind, soul should be one, so that you will be taking some good righteousness and whatever the resource person will be speaking to you, and at your mental level, at your physical level, at your social level and emotional level, whatever the development will take place, and it should be in a positive way. Thank you everyone. Really, Om is a pattern of Hinduism and India, and it has been well accepted and became famous. Universally, it has been accepted. Thank you, ma'am. All the children have been ignited towards learning. Excuse me. D.A.V. United is an initiative of D.A.V. College Management Committee propelled to encourage and strengthen the community engagement between the students, teachers, and alumni of the prestigious D.A.V. schools and colleges. A movement to connect alumni, teachers, principals, managers, and students along with associates and friends of D.A.V. for united growth of all. Literature Conclave is a collaborative program under the aegis of D.A.V. United. It has been visioned in order to provide a platform full of opportunities for budding writers, poets, and future icons. Its mission to make the school children aware of avenues in literature, how to make children promising literarians, poets, authors, and great people in the field are being exposed to children in order to create interest in the children towards language and literature. Literature is a golden art without which we cannot know about what has happened, is happening, and will happen. We are very much elated to have amongst us Mr. Prasanna Bhatt, who has vast knowledge in the field of education. It's an honor, sir, to get to be with you and you be amongst us. We welcome you, sir. I request all of you to again welcome sir with a big round of applause. On that, you all should be successful in your lives and become promising icons. A big round of applause for everybody, and I, on behalf of D.A.V. Berhampur, welcome you all. Mr. Prasanna Bhatt, ex-principal, Arrogant College, Berhampur, and Gyan Vikas Junior College, Berhampur. A very simple and down-to-earth person. He did not want to at all cap himself for his success. He has years of experience in the field of education. He has been conferred by doctorate in literature. Let's all inspire ourselves from his knowledge bank. He is world famously known as Ambar Prasanna Kumar Bhatt. His poetry comprises of about 3,000 poetry. So a big clap goes for sir. Sir, we welcome you all. Sir, we welcome you all. I request everyone to honor sir with a cheer clap. I request you to share, take what he is going to speak today. He will be speaking on importance of literature, career prospects in literature, public speaking skills, the do's and don'ts, and LSRW skills. And let us take some important cues from sir. Sir, please be on the stage. Thank you, sir.
Sweet personalities. Because you are not my students, you are all personalities. So I meet from my core of heart, sweet personalities. Feeling fortunate enough that I can't describe in words how fortunate I am. Thanks a lot with a bunch of just mine to this great institution who welcomed, who honored, who admired me with such a love and affection that no stones unturned to find a way to greet you, to thank you, to show my love and affection. I am simple man, but such a personalities. Before you personalities, what shall I express my words? I don't know, but one thing, I know something about English, that's why I'm welcome. So I feel proud to stand before you, speak personalities, discussing our language, English. Whatever it may be, language. Language, what is language? Friends, language is nothing but to express your feelings, thought, imagination sprout from your heart. There are so many languages. Different persons have different language. Different regions have different language. If you count language, there are lakhs of languages in the world. Even a bird shows its language. When a cow utters a sound, and the other cows are. When a crow caws, other crows are. That is also language. Language has no limitation, but among all languages, there are certain written languages. Language differs from person to person, region to region. Among all the languages, our mother tongue, mother language is supreme. Your mother language, mother tongue may be Odia or Hindi or whatever it may be. That is proud from our hearts. Give importance to your mother tongue. Never forget your mother tongue. Never discolor your mother tongue. Because whatever you know, I am an English teacher. I speak English, I teach English, I know English, but first comes Kriya. Because my mother tongue is Kriya. Then in mind, in brain, I translate in English. I can't speak English hours together, but I can teach English, I can speak English hours together in English. Because my mother tongue is proud from my core of the heart, from my kernel of the heart. That is reflected in my mind and brain, and we speak in English. So never forget your mother tongue. If you forget your mother tongue, if you neglect your mother tongue, you can't
speak anything, you can't get anything, you can't know anything. Give importance to your mother tongue. That is prime language for you. Then question comes, if mother tongue is prime, why should you give importance to English? The question comes, if mother tongue is prime, if mother tongue is supreme, why should you give importance to English? So students, mother tongue confines you. You will be encircled with some area, in a definite area. You can't beyond that area. If you are acquainted with your mother tongue only, then you will be confined with in Odisha. If your mother tongue is Oriya, then you will be confined in Odisha. If your mother tongue is Hindi, then you will be confined in India. You know, in every night, so to say, in every night, my mind is roving around the world. Every night. Because I am a poet. I meet with a lot of poets around the world. Holy language helps me to convey my language, to interact with my other poets, other personalities in English. English is an international language. Everyone knows you, whatever it may be, you capture one international language so that your personalities, your identity should not be encircled with a limited region. Whatever language you capture, but I'm sure English is one of the international languages that will give you reputation, that will give you name and fame. You know very well, life is nothing but name and fame. What is there? What is yours? You are not yours. Your life is not yours. Your body is not yours. Your wealth is not yours. Only your name and fame is yours. That is written in golden letters in history. Mahatma Gandhi died, but his name is written in world history because he left some footprints on the sand of time. So, do something for having name and fame. What is wealth? Wealth is nothing. Today you are wealth, tomorrow may not be. But nobody will steal your name and fame. So if you want to move, if you want to rove your identity around the world, give importance to English. This is the importance of English literature, to get your name and fame around the world. Never think that you are an airtight compartment. Oh students, oh personalities, you are not my students, so I should not tell you. Oh, my dear personalities, your mind is not airtight compartment. You are blessed with such a bliss and bliss. You are blessed with such a divine gift that your value cannot be valued with any value. Oh friends, your value cannot be valued with any value. No unit will declare, no unit will come forward to value your value. You know, who is the main in Google? You know who is Google? Who is main in Google? Who is CEO in Google? Where is he from? Where is he from? You know his life career. You know his life history. Till the completion of graduation, till the completion of B.A.V,
he had not a mobile. But now he is world famous Shiva. Only due to this language. If he had not known, if he had not recognized before English, he could not have joined Shiva. And only knowledge is nothing, you should have creativity. He has such a type of creativity. His creativeness thundered the world. His creativity stunned and surprised the world. You should also create. The book is nothing, this certificate is nothing, man. Don't mind my students. This certificate is nothing but an entry pass to enter into a competitive exam. I can declare, you should come out of this box. Read the eye of teachers. Teacher will teach the books only. Come out of the class and read the eye of the teachers. What is inside the eyes of the teachers? Capture a knowledge. Capture the teacher's knowledge. Come out of the class. Come out of the book. Book cannot say anything. Oh man, you have got the certificate. Reading 4 to 5 pages, 4 to 5 poems, 4 to 5 stories. Is it enough for you? Have you got the knowledge? No. You have got only a certificate. Just getting some knowledge about math, science, physics, have a limited knowledge. You know, one day Albert Einstein was going along the seashore. A man said, "Oh Albert, you are genius in physics, you are king of physics, you are really great." But students, Albert answered, "No man, I am nothing in physics." You know Albert Einstein, physics. He answered, "Oh man, I am nothing. I have collected some pretty pebbles while walking along the seashore. There is a vast ocean of knowledge lies behind me." It was the answer. It was the answer of Albert Einstein, who was a famous physician, who was a famous physicist. I have collected some pretty pebbles while walking along the seashore. There is a vast ocean of knowledge lies behind me. You read something from book, you collected some knowledge from book, you should not think that is your genius. Just now I asked one question. Oh students, 9th and 10th class students, all the teachers cannot say everything. The book cannot say everything. You should be creativity. You should have create your creativity. You always use M after I. Can you tell me? Can you use E after I? Generally we use M after I. I am a teacher. I am a student. I am. Can you use E after I? That is creativeness. Who will say? Who will say? Come on. I is the letter of the alphabet. Yeah. This one. I is a letter of alphabet. Then what is I? I is first person singular number or I is the third person singular number? Yeah. When I am a teacher, then I is a first person singular number. When I is a letter in alphabet, that is I is third person singular number. Because your English is prominent. So far as D.A.V. school is concerned, so far as CBSE and ICSE school is concerned, English is prominent. English is given much importance. So get some type of creativity. English has no father and mother.
Oh students, go teachers, friends, I like to tell you, never tell the meaning. Never tell the meaning of a word. Whenever a student asks you what is the meaning of this word, never tell me the sentence. Because in English gives importance to context, not meaning. Context creates meaning, not meaning creates context. In every language, there is a definite, concrete definition. But in English, context creates definition. Context creates definition. That's what is the importance of your language. You should know. You should create. Never tell. Just like I like to tell sentence. One sentence, 3 words, different meaning. Same word. I saw father sitting with the father after praying father. I saw father. You see, man? You listen carefully. I saw father sitting with the father after praying father. Yeah? I saw father. I saw father. There is no thee. If thee is not used before father, mother, that is my father. I saw father after praying the father. If thee is used, that refers to priest of the church. And capital of father, that refers to God. So if somebody asks you what is the meaning of father, never say meaning. The father, then only the student will speak concrete to that meaning only. Because English has no father and mother. Context difference, meaning difference. Context difference, meaning difference. Context gives importance to meaning. So, if you want to put your name, if you want to know more and more about any knowledge, see the eye of the teacher. Read the eye of the teacher, not the book. If you read the eye of the teachers, then you will get more knowledge. Just now I asked one student who will say, how many brothers and sisters have you, man? Come on, who will answer? One student. How many brothers and sisters have you? Come on. Yeah. One sister. One? How many brothers and sisters are you? One. Yeah. Because in books it is written. In every, from 4th class, from 1 class, we have been learning how many brothers and sisters have you. No book tells how many brothers and sisters are you. Is my question wrong? Is my question erratic? No. How many brothers and sisters have you? 1. How many brothers and sisters are you? Yeah, including you. So get creativity. My view is, come on. Yeah, I told you in the library room. I told you in the library room. Come on, tell me. All Indians are brothers and sisters. All Indians and everybody are brothers and sisters. Brotherhood. That is sibling. How many siblings? How many tell you? Brothers and sisters. That's why English dictionary created another word, sibling. You know, in vision, English word changes from time to time. That's why another word has added. English dictionary has added another word, sibling. Yeah, world is my family. Everyone can share. All the worlds are my brothers and sisters, you can share. But how many brothers and sisters are you?
Brothers, sisters, I have not used thee. If I use thee, that is different. Including you, you should tell, yes, I am one. I am only one. If you have one sister, we are two. Understood? We are two. So, come on, students, the importance of literature. The importance of literature, the importance of English. So today I have been invited to discuss about English. So I must praise English. So if you want to circulate, if you want to be popular in the world, you must give importance to English. Without English, your name, your identity, your identification will be encircled with same one region. You cannot touch other than India. If you touch Pakistan border, you know nothing about Urdu. You know nothing about Persia. How can you exchange your view? Because Pakistanis, really it happened. If you know about my English knowledge, very strange, due to nature, unfortunately or unfortunately, I was compelled to stay in Madras for 3 months. I knew nothing except Odia, some sorts of knowledge in English. You know, Madras, only Tamil and English. They dislike Hindi. You go to Simanchalam, Vijayanagaram, they know Odia but can't speak Odia. They know Odia. If you speak in Odia, they can understand but can't speak in Odia. They will speak in Hindi and English. So, Hindi is popular. Let us discuss. Let us focus what is the importance of English. Because friends, if you want to know any language, because time is very short, I am not going to reflect in other side. If you want to give importance, if you want to be the master of any language, you must give importance to 4 things: listening, speaking, reading and writing. It is very general, everyone says LSRW, listening, speaking, reading and writing. Listening. If you want to give listening, don't mind voice, I want to play some girls. If you want to a good listener, be just like girls. Be like girls, you know. At the time of discussing with girls, your mark, they will continuously repeat actually, then you will start. Then they will actually, then you will start. They will listen. They will not utter a single word. They will not disclose any view after listening everything. Obviously. Am I wrong? Am I wrong, students? Actually, they will go on repeating. If they are given the chance, they will start actually, they will utter, then you will lose your patience, then you will start. Sure? The last word, obviously. So be a listener. Yeah, you will learn from these words actually. All the girls are habituated with these words actually, then obviously. Listener. Today's listener will be tomorrow's professor. Today's listener will be tomorrow's orator. Listening carefully, listening attentively will be helpful to you. Because pronunciation differs from person to person.
Nobody will be master in pronunciation referring to any phonetic symbol, any phonetic dictionary, anything. If you listen carefully, then you will capture different pronunciation of different region. Pronunciation differs from person to person. I have learned when I discuss with the Arabian country people, then my pronunciation I change my pronunciation. When I discuss with Americans, I change my pronunciation. When I discuss with Southern India, I change my pronunciation. You have to collect, because there are three types of pronunciation: American, British, and India. The most favorite pronunciation, so far as my knowledge is concerned, Indian pronunciation. So pronunciation is very, if you listen carefully, if you listen attentively, then you will be master in English. And you know very well, you are CBS student, so far as my 45 years experience, CBS students can speak fluently hours together. But don't mind students, it is my experiences, but lots of errors. Because, no, I'm not telling, I'm going to praise you. Because you are, really, it is, obviously it is inevitable. At the time of speaking, what is your view? Just to expose your feeling, thought, imagination, sprouted in heart. No need of drama. Go on telling. Nobody will criticize you. Really, speaking is such a power. Everyone cannot speak. Everyone cannot tell a single English. If I tell I am this Odia medium school student, they cannot utter a single word. If this is the difference. If you compare CBSE, ICSE, and CSE, though I am the CSE teacher, though I was the CSE principal, but I have connection with all types of students. Whenever I put question, CBSE students, ICSE students stand up and ask the question. But CSE students, though they have knowledge about the answer, but they cannot ask, they cannot answer, because they have no courage to answer in English. Listening is a very important one. That was speaking. Your when listening and speaking are complementary. Listening and speaking both are complementary. Listener and speaker both should be attentive and distinctive. If you speak distinctively, and listen attentively, there will be a good understanding. So give importance. Your listening depends on distinct. Speaking attentively and listening. Come on, distinctly. Your pronunciation distinctive. If you pronounce the word in different manner, that will go misunderstanding. Speaking and listening both are complementary. You know, complementary, C-O-M-P-L-E, not L-I. C-O-M-P-L-E, M-E-N-T-L-Y, complementary. That 120 and 60 both are complementary. If you meet 120 and 60 degrees, there will be a sentence. You know, if you add 120 degrees and 60 degrees, there will be a sentence. Otherwise, you can't get that. Otherwise, you can't get a sentence. How it is? Listening and speaking, both are important. When you meet each other, you must listen attentively. You must speak distinctly. I like to tell you a simple story. Once, a friend from America
came to meet his friend in India. Listen carefully. A friend from America, a man from America came to India to meet his friend. And that day was 1st January. He wished, he greeted. He greeted the, you know how you greet your New Year. Oh man, Happy New Year's Day. Happy New Year's Day. American friend greeted him Happy New Year's Day, but Indian man know English but can't give importance to the real pronunciation. Yeah, shame to you. You generally say shame to you. Shame to you. Oh man, Happy New Year's Day. Shame to you. Oh man, Happy New Year's Day. Oh man, shame to you. What is the difference? We cannot say. When your friend says same to you, good morning, same to you. There is a little difference in pronunciation. Shame and shame. I am telling two sentences, listen carefully students. At the time of speaking, how one pause, you know pause? Or how pause is important. We are going on speaking, especially the children girls. You know these girls, yeah, I am going to be result. At the time of discussing, girls are chuttering, girls are discussing in such a manner there is no pause at all. Without pause they are going on telling. But how pause is important you mark. A judge declared the verdict. A judge declared the verdict. And hang him, not kill him. Sorry, leave him, not kill him. George declared the verdict, the typewriter is typing the order. Leave him, not kill him. But suddenly George changed the verdict. Leave him not, kill him. You say, what is did you understand? You say, oh students, listen carefully, what is the importance of pause in your voice, in your sentence, in your speech. Leave him. First time the judge declared the verdict. Leave him, not hang him. Leave him, not hang him. Suddenly, the judge realized the mistake. Again he said, leave him not, hang him. Same words, same sentence, only different one pause. So students, at the time of discussion, give importance to your pause. Otherwise, that will be, what is the meaning? If I give him, leave him, you say, leave him, then after a pause, I will start the sentence, not hanging. What will be the meaning? The free. The period will be set free. If I pronounce this sentence, leave him not, hanging. The period will be permissible. So my view in time of speaking, give importance to pause. You should not go on chatting, go on speaking without any pause. Pause is very important. Pause is very important to convey your view and thought.
without pause, never say, never declare any sentence. Just like yeah, 5 days back it was a great discussion at international. I have react, interact, and then get the conversation. There, in poetry, there is no need of comma. You see, the same sentence I am giving importance to. It was a great discussion. Photo 5 days back. Friends, I wrote 3 sentences which have and have a difference. It is that one comma may save one's life. One comma may save one's life. Really, what is the story? That George declared the verdict and wrote the verdict on the paper and handed over to the peer. He wrote the verdict, leave him not hanging. The sentence. Leave him not hanging. George wrote the verdict on the paper and handed over the paper to the peer. While handing over the order to the jailer, a drop of sweat dropped on the comma. This comma was irrational. But the peer does not know the importance of comma. Yeah? Comma is nothing. He put the comma here. He put the comma here, leave him, whatever, you say mark. There was comma here, comma was here, and here, comma. One comma saved one's life. Leave him not, hang him. Leave him not, hang him. Death penalty. George declared the death penalty, death sentence. But peon saved that man in one comma. Leave him, not hang him. So, students, in English, each and every word has importance. Each and every punctuation mark is important. Don't be careless to anything. And so far as you are very good about speaking. You know, I'm telling you about speaking because you are giving much importance to speaking. Spoken English is your given prime importance. Oh students, in every language, that's why I like to ask you one question. If the teacher is in the class, you want to get the permission into the class, what do you tell? What do you request? What do you want that? Yeah, come on. May I get in? May I come in, sure? Yeah, sure? The next day, the monitor was in the class. What permission do you want? What permission do you beg to? Come on. The next day, monitor was in the class. What will you express your sentence? Yeah, come on. Can I get in? Yeah. Suppose the next day, principal madam is in the class. What will you say? Speak up, children. Yeah, come on.
May I get in? Everyone, if you want to enter in the principal's room, come on. Suppose you should know, because you give importance to spoken English. Your spoken English is your important. You give much importance to spoken English. I am jumping into spoken English. Suppose you want to enter into, you want to get the permission to enter into principal's room. May I get in? If you want to enter, if you want to get the permission to enter into your president's room, what will you tell? You say, in every language other than English, there are three, two, tume, apart. In Hindi, आप, तुम, तू, in Odia, तू, तुमे, apart. Apart. But in English, second language is only one, you. Your request, your honor, your way of talking depends on the use of moral law. Understood? You say in Hindi, आप, तुम, तू. In Odia, अपना, तुम्हें, तू. But in English, the second language, second person is only one, you. Then how can you show your respect? How can you show your honor to you? You means all. You know, first I read to you what? Speed body, speed personalities. For students, I did not tell speed morning speed students and other things are there. So you should collect some words to greet others. I declared speed day, speed personalities. If I greet you good morning or good morning nothing, you should be unique. Students, your uniqueness will attract the attention of the personalities, a listener. Be unique. Always try to be unique. All greet me good morning, but I use the one word, sweet morning, sweet personalities. Because in this dialogue, in this platform, students, teachers, all other persons are, different persons are there. How can I convey my regard? How can I greet all? I have to say one word that will touch everybody's heart. I use the word sweet day, sweet personalities. A personalities is a word that will read, that will respect to each and every person. So come on students, you didn't answer my. So you, your person, at that time, monitor was you. May I come in, may I come in monitor? May I come in short? Yeah, this is, I like to tell you students, you are using spoken English. In spoken English, you get three types of people in the society. That is formal, that is one is formal, another is informal, one is semi-formal, another is semi-formal, and third is informal. You should know about this. This is the importance of spoken English. You should give importance. This is the importance of spoken English. If you want to know about spoken English, you should know about this type of people. That is formal, semi-formal, and informal. You see, I am telling, if I want to enter into principal's room, if I
get the permission, if I want to get the permission, if I tell ma'am, can I enter into a room, ma'am? Can I get into the room? No. No, never. Then I change my, may I get in, ma'am? She might be in some busy mood. No, wait. If I say, ma'am, could I enter into, ma'am, could I enter into your room? Okay, just wait. Just within short time. You say, can, could, can, may, then could. Last word, most humbly and respectful begging permission. Ma'am, would you mind entering into your room? Madam, would you mind entering into your room? You know, in Hindi, if you translate into Hindi, how it will be beautiful and sweet. Would you mind, ma'am, would you mind entering into your room? Or could I enter into your, ma'am? Could I enter into your room, ma'am? This would you mind the highest degree of permission. So, differs from your monitor, you may use can. Teacher, you are acquainted with the teacher, you are habituated with the teacher day by day, every day, then you can use may. But if you get the permission from other person, high degree person, you should use could and or could you mind. This should be important for you. In formal, you should get this knowledge about ma'am is formal. Ma'am is formal. And this is semi-formal teachers and informal your friend. So you should categorize three types of people and you should treat those with the category of people because you is the only one. Suppose I am telling a man is reading the newspaper inside the box. Inside the box, you want to read the paper. If you ask for the paper, will you give your paper? Will you give your paper? Will you give the newspaper? Why? Why shall I give you? No. Can you give the paper? Then after 2 minutes, can you give the paper? Yeah. Wait. May you give the paper? Could you give the paper? If you use last word, could you give the paper? Would you mind giving your paper, please? Would you mind? Would you mind giving your paper, please? Yeah. His heart will be melted. Your heart will be melted, and he will definitely hand over that. Sorry, sir. So, dictionary is speaking. Oh, students, then come on, I'm given importance to spoken English. That's why I'm telling you should know what are do's and what are do nots. Situation differs from person to person. Your word must be different from person to person. Oh students, your word is your beauty. Be careful students, your word is your beauty, you are not beauty. You are not beautiful. Your word is your beauty. Your language is your personality. Be careful this sentence. I have written one poem about this. Oh lady, you are not beauty. Your word is your beauty. Your language is your personality. And the words you have used in the language is your parents. And how to use the complete story is your culture. So give importance to your words. Oh students, your word is your beauty. Your language
your sentence, your parents, because you learn sentence from teachers and fathers and mothers. Your word is your beauty, your sentence is your parents, your use of words. Use of words. You know, you go to Berhampur, from that area, what type of words they use. Are you from Berhampur? Suddenly they will ask. There are some words used in Baleshwar area. Suddenly they will ask, are you from Baleshwar? So the words in the sentence refers to parents and teachers. And the language, the story, the words you use shows your culture, shows your area. One thing that I like to tell you, one word you should remember, one sentence you should remember. Your word is your beauty. Within your word, with the use of your word, you will mesmerize others. You may hypnotize others, whatever, however he may be, however she may be. If you use your word, if you use your nice and beautiful words, beautiful and nice words may mesmerize, motivate, and so to say, mesmerize others, however he may be. She wants to test. Man is in angry mood. You express words in loyalty. If you express the words in loyalty, definitely she will show humbleness. Why not, man? You know, chanting will mesmerize the poisonous cobra. The use of some words in chanting, the words in the word, some words in chanting, you know, mantra. Just at the first man recited the mantras. If you get the words, the meaning of the words, then you will get peace and you will pacify your mind. So your word is your beauty. You should use your words. That will define your personality, the language of your personality. So spoken English gives importance to words. Not complete sentence. Which type of words one has used in spoken English? You are giving importance to spoken English, and I have been instructed to give more focus on spoken English. I have told you, if you want to give importance to spoken English, first of all you should know who is formal, who is informal, and who is non-formal. Formal, semi-formal, informal. Knowing these three types of person, use your words. And if you use your words haphazardly, if you use your words haphazardly without knowing formal, semi-formal, informal, then you will be put into problem and you will be offended. You will be ashamed of. You will not be ashamed of. You will put shame into your father and mother, parents and your teachers. You understand? So, come on to, I have already told you regarding LSRW, reading. Reading is a good habit. I have already told you, these three books, these 4 or 5 prose, 4 or 5 poems, something. So students, I like to tell you, I like to ask you, do you read in 10th class? Do you study in 10th class, or are you in 10th class? Who will ask the question? Except that one. What will be the correct sentence? Except that God. Oh, which one is correct sentence, man? Do you read in 10th class? Do you study in 10th class, or are you in 10th class? Come on. Yeah.
If someone asks you a question, which class do you read in? Never say I read in. Because I read. What is the meaning? What is the definition of read? In English, every word has a definition and every word has appropriation. Be careful. In English, every word has appropriation. Appropriate word is used in appropriate place, then that will be appropriation. If you don't use appropriate word in appropriate place, and that will show the different meaning. You see, I read in 10th class. What is the meaning? Everyone says, what class? Everyone asks the question, which class do you read in? What is the meaning of read? Only books. Only books. Do you read only books in school? No. If you say, I study in 10th class, only you study? Only you listening and speaking, other than that, no curricular activities? Then your answer should be, I am in 10th class. I am 10th class, that means you are getting all types of activities of 10th class. So never answer, I read in, I study. It is my creativity. I advise to each and every student, never say I read in 10th class, I study in 10th class. Always say I am in 10th class. Because you don't read the book, only you have come to school not to read. Read means reading the books. You have not come to school to study, only teaching and speaking in the classroom, that is study. Your area, your situation, your identity is not inside the classroom. Your identity is inside this school, that classroom. So always you answer, I don't read in 10th class. I don't read in 10th class. I don't study in 10th class. I am in 10th class. Understood? Yeah, I am in 10th class means you participate in all curricular and extracurricular activities. There are so many differences in this spoken English. You should use such type of sentences. You should learn such type of sentences from other activities, from other areas. Only books cannot say. Only teachers cannot say. You should not confine with books and teachers. You should collect some information, some knowledge from outside of the teacher, outside of the book. Your mind is not an airtight compartment, man. You are gifted with a supreme gift of God. Oh man, just like I expressed to you, CEO Google, who will value his value? Your value? Oh students, don't think you never measure your personality little. Your value cannot be valued in any value. You may be president, you may be CEO, who cares, who knows? One day you might be CEO, you might be manager, you might be president, who knows? That lady from a rural area will become president. Have you ever imagined? Have you ever dreamt that Murmu would be the president of India? No. So why not you? Never value, never undervalue your value. Nobody can value your value with any value. So always think your value is in high value. But if you want to give importance to your value, you must cultivate. Never harm. You say one word. When everyone says labor hard, you will labor hard? You will labor hard? No. Will you labor hard? Come on, students. Will you labor hard? Will you labor hard? No.
never hard? No, never hard. Oh students, never hard, I can share. You are student, you are the soft bottom. Your father, your parents have sent you this school not to labor. Not to labor. Never labor hard but strive hard. Oh man, this is the word, don't say never. Never is the appropriate word is there. So labor, who to labor? The strive STRIV. STRIV is a mental exercise. You have come to this place for mental exercise. Labor, physical exercise. It is the definition in dictionary. Everyone says labor hard, without labor hard, you can't get the truth. No, change the word. Labor and strive, you get the meaning. There is a hell and heaven difference. This is the labor. And if you labor hard, laborer is laboring. Laborer is laboring, but you are student, you are soft bottom. Don't labor hard. Don't labor hard, but strive hard. You are very, strive, STRIV. This strive, what means you always strive hard. If you strive hard, it is not easy. Striving is more difficult, more painful than labor. Be careful. Striving is not easy. What pain and pain a person is getting from labor, the more pain and pain is getting in striving. Be careful. Sure, one thing I like to do, don't labor hard, but strive hard. I am going to define what is job. Labor is a physical exercise, but strive is mental exercise. So strive hard. So you should use such type of word, you should know such type of words at the time of writing. Writing is formal. In writing, you should use formal words. LSRW, I like to tell you students, these are geos. You can't imagine their knowledge. You can't estimate their knowledge. You can't estimate their knowledge. If you encourage these personalities, you know nothing about their inner latent talent. You have never estimated these teachers' latent talent. If you encourage them, if you instigate them, without instigation, nothing will be captured. Nothing will be captured, man. Without encouragement, without instigation, nobody will give you. Oh man, if a baby does not cry, mother does not give. How can you get, man? You know? If a baby does not cry, mother does not will. How can you get? How can a teacher give you all things? How can a teacher give you all knowledge to you if you don't cry? If you don't demand? If you don't pressurize her or him to give all knowledge? So students, reading is not encircled with, reading means book. No man. You should not think reading defines only book. Reading is encircled with some books, physics, chemistry, math, biology. Oh students, read the eyes of these fellows. Read the eyes of these personalities. Then you will get knowledge. Read the nature.
book is nothing. I have already told you. Read book is nothing. This certificate is nothing but to get an entry pass to enter into any competitive exam. Then, sitting in the competitive exam, you will get some answer that may be sufficient or may not be sufficient. I have interviewed a lot of teachers. I explain one example. A physics lecture came. PhD first class, MSc first class, gold medalist. When she entered into the classroom, she could not utter a single word in physics. She could not explain because she was bookworm. She was bookworm. His life was in book. His period is in book only. Don't be bookworm. Reading does not mean reading the books only. You read the nature. You read your parents. You read your parents. You know, they remain silent. The teachers remain silent. If you don't encourage them, if you fail to instigate them, they will not tell you. As long as much as you encourage him or her, instigate them, they will throw, they will rain, they will bestow such type of knowledge that you will be drenched with knowledge. You will be drenched with knowledge that you cannot collect. You should not think that reading is confined. Reading does not confine with some books. Read the eyes of teacher, read the nature. LS or completer. I have already clarified LS or common writing. For man, writing is evidence. Whatever you speak doesn't matter. Whatever you learn, whatever you listen doesn't matter. Whatever you read doesn't matter. But what you write, that is the evidence. That is the witness of your knowledge. So, at the time of writing, give much importance to each and every word. I have already written. At the time of writing, if you change one sentence, if you change one word, that will be in different meaning. Don't be careless at the time of writing. You say, I told you this, I saw father sitting with father, sitting with the father. After praying father, after praying father. You say, what is that? At the time of writing, I gave different huge father. You know very well, if a student asks the meaning of a word, we generally tell the meaning without knowing the context. For students, context differs the meaning. Context shows different meaning in different words. The meaning of word shows different meaning in different contexts. One word, I discussed it in office room. You say father, I saw father. So if you ask a teacher, ma'am, what is the meaning of father? They will generally say, man parents. You know? But father, you say, I have not used any article here. I have not used any article here.
So if you don't use any article before father, mother, sister, that is your own brother, own father. If you use a father, that is the priest of the church. If you use father capital letter, if you use capital letter, that is God. So your writing is the evidence, and your writing shows different meaning in different place. So giving important, if you that is the, don't mind serious students, I like to advise you. So as far as my knowledge, my experience is concerned, my experience is that I don't mind, never take it lighter in time. Take it lighter in. Serious students don't give importance to punctuation. Serious students don't give importance to punctuation. Serious students don't give importance to tense. These are two errors I have found in my career. Because you write what you speak. You write your spoken English, but hell and difference spoken English and written English. Spoken English and written English, there is a hell and heaven difference between spoken English and written English. Spoken English is not written. Spoken English is not recorded, but written English is recorded. It is clearly visible. So, you should give importance. I have already told you what is the importance of comma. What is the importance of use of different words, because English has no father and mother. Different situation, different context, so different meaning. So the writing. If you, I'm going to complete. Are any question? Any question? Because it is my habit. I give 100% independence to my student to ask question. Any question? Any student? Okay, student, I will ask you. If you don't ask me, I ask you. You have been learning English from one class. From one class? You know? I think you are genius. Come on. Come on, man. You already nodding your head. You have been nodding your head. You know, teacher cannot declare all the rules. You have been learning the use of an since one class. Can you tell me the definition of an? And no. Yeah, and. What is that? Yeah, it is used before. It is used before A, E, I, O, U. Okay, come on, listen. What? Right now. What? Interesting? Okay. Come on. Write the word. Interesting. I don't. Interesting. You see importance of words. Interesting. Intelligent. Interested, indispensable, inevitable, important. As per your definition, can I use as before all? And we are going to ask you to teach us. Oh man, stay hungry, stay foolish. It is a great definition of
great man who will say, Biggest. Oh man, stay hungry, stay foolish. What is the meaning? Stay hungry, stay foolish. If you take in lighter vein, stay hungry. It does not mean to your belly. Stay foolish, it does not mean to your morality. What is the meaning? There is an inner meaning behind this word, stay hungry, stay foolish. Always you think that you know nothing. Always you think that you know nothing. That is the meaning of stay foolish. Your date I like to tell you. So you should know, you should give importance about listening, speaking, reading and writing, the literature. So English is such a literature that will not make you popular around the world. So you should get the definition. I like to tell you, students, each word has some definition. Each word has some definition. You should collect the definition from your teachers. And is used before a singular countable noun, a noun phrase, a noun clause, in which the first letter is pronounced vowel sound. You may not get such type of definition in any book, but you should remember. Okay, students, if you want to be popular, so far as my knowledge is concerned, so far as my 45 years experience is concerned, I like to tell you, grow up your knowledge in English if you want to be popular, your name and fame. Not only in India, but also in the world. Because I like to tell you, every day my mind is roving around the world. Every day I talk with African man, American, Russian, different people, from Japan. So improve your English and speak English clearly, speak English distinctly. Listen, speak English clearly, listen attentively, read mindfully and write correctly. Then you will be popular in English. Thank you so much. Stop it, guys. Yeah. Let's go. What I will discuss, what I will tell, I was really fixed. I was in dilemma what subject I will teach. So whatever it may be, if I have offered some knowledge, some little knowledge, then remember me, otherwise forget. Let's all acknowledge the gracious presence of Ma'am Sumitra Behra. She is a literarian from the Oriya Queen. After this, we are going to have the Oriya Conclave. So let's all give a big round of applause for Ma'am. Thank you, ma'am. But very brief because of shortage of time. I can only tell some precepts from Sir's speech. Children, we have always been compelling you all to always speak in English. Speaking in English, irrespective of your problems and troubles, whether you are speaking it correctly or not, will surely make you get a courage. I forgot to tell you, students, really it should be delivered to you. Most of the students use English, start English, then use add Hindi or Oriya. If you
make such type of habit, then you can't be good at English. Whatever it may be, go on speaking in English. Nobody will criticize you. Nobody will find out your error. Why do you get fear adding Hindi or Odia at the time of speaking English? Go on telling without any fear. Yes, sir. Thank you very much. Sir actually has given the technicalities of LSRW very nicely. You could, I think so, all the children must have grabbed some beautiful tips on that. And you could have seen also the sir did not speak a word from Odia as all Hindi. Only a bit he did the sloka. Rest all he spoke in English only. That's what we need to speak the language whichever we are into. Not mix it and speak. We have it's years children have been given poems to the English teachers. And poems we had taken it up and we were able to publish it in the magazine. It was simply during the COVID pandemic time that I just messaged principal ma'am that ma'am, children are giving nice poems. If you would like to read, I will pass it on to you. So ma'am very nicely acknowledged it and she told let us go for an anthology of poems. And there we are here with a beautiful publication of anthology of poems written by our own very children. The year which, the batch which went away, the present batch of 10, and just recently 2 days I took children from 9th also very profoundly, beautifully, they gave up the poems to me in the soft copies and I could bring up with the help of Ravi sir, I don't find him, very beautifully the poem book is there in front of I request principal ma'am also to please be on the stage to unveil the small book of poems. I request Amrita ma'am, Swana ma'am, Meenakshi ma'am, Durga sir to please be on the stage. Give a big round of applause. Cheers for all the children. I think they can carry on the forward of the job. Anyone who have written the poems in the book, which I have been asking you? Do we have anybody? Subham, I think so, is here. Subham is there? Subham, Rudraksh is there, I think so. Come up on the Rudraksh is also there, I think. It is your poems published under the book, children. Subham Pantro. Cheer up yourselves, children. And congratulations to ma'am and school. I think so this is the first publication of our poem books in English. Anybody else who are doing that given poems from standard 9? Come. I think so. Come. You can all see a wonderful gala presentation of the book. Give a big clap for yourself. Medium is English. Do not forget mother tongue. I do not tell that. But we surely need to grow in English. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Request ma'am Suchita ma'am, please be on the stage to present your memento. So it will be acknowledging our thanks and let your heart remember us through the years to come. It's an humble gift, sir. We are nothing before your great knowledge, sir.
request Jagdish sir to please come here and please practice the dance. Good afternoon, one and all. I'm not a poet like sir, but when I write few words, by look or truth, it becomes a poem. Anyway, sometimes I write such poems, and I want the reader or the listener to get what I am writing. And here I have the same with you, because I always say, a silent listener is, come on, I have taught you, a silent listener is the best learner, not good, the superlative, candidates. Okay, so listen silently. Let me see who can answer. Of course, my short poem contains all the parts of an aeroplane, and I have connected that to something there. Let us see if you can get it. The title here is Catch Me If You Can. Are you ready, children? Yes. Okay. I am 34 years old, still flying higher, strong and bold. Any idea? No. I have a new pilot in my cockpit who controls everything bit by bit. Any guesses? Are you listening? But not guessing the reason. Unlike other planes, I have 5 flaps. These are the technical terms of aeroplane. That's how my inner machine perfectly works. Any guesses? No. My head is in Delhi. That is my speed breaker. I gently carry out its order. Any idea? No. Love, understanding, trust are my engine cowling. They all propel me to have high flying. Any guess? No. Of course the hand, yes, Divyanka. Of course, give a big hand, you see. I was connecting school to an aeroplane. I gave 2 evidences. I'm 35 years old. I have a new pilot that also put up somehow. Divyanka, thank you, Priyanka. So I did not complete the point, let it be there, okay? Once the secret is revealed, then you have no fun there in that. Yes. My mind wandered like a passing cloud in the morning. Everywhere in Berhampur. It got stuck in southern Bihar when I saw a glitter. When I entered, I saw a light brightening others. Interesting, I sat behind and asked, what's going on here? The answer gave literary conclave. I listened and listened, and it was so interesting how time flew.
I could not realize. When it was time, I requested time, please stop me. Time had a different look and said, I can never be stopped, I can never be stored anywhere. I still requested, please stop. Time said, go to hell. Go. It said, go to hell. But before going, it left me a note where it was written, all is well that ends well. Yes. The first literary conclave of our school, which looked like Hamletian dilemma of to be or not to be, has been materialized today. And we are lucky to have with us Prasanna sir, who really brightened us with LSRW. Students, those who are talking behind, if they have not learned anything, at least LSRW must have been heard by them. So sir, it was wonderful to listen to you. Your name is a joy. You made the time enjoy. You made us laugh and thoughtful. D.A.V. is grateful. D.A.V. decorated with me a dazzling echo lamp. Admire and adorable. Thank you, sir. Thank you. And my figure of devotee is still. Let the spirit continue, sir. Then we have added up another resource person whose presence really encouraged others. That gave the idea, or that gave the information that we literature people always love literature. When we are called, we are there before time. That shows the interest we have for others. Thank you, ma'am, for your presence, which really added something new flavor to us. Thank you for being present over here. And all this was possible because of Principal ma'am. Within a short notice, she insisted it has to be, and it is now. She encouraged, she called the teacher concerned, and she made it possible. Though she is not from literature background, but she is very interested in literature. You see, the poem that was published today, she gave a concern and she gave everything to it. So let us have a big clap for our principal ma'am. No doubt our supervisors who are always in burden, and this program really added some more burden to them, but they did really very well. So thank you supervisors for encouraging us. Teachers from Chhatrapur, led by Durga sir. Yes. You also joined with us, spent the time. Thank you for that. And all the teachers of English literature, directly or indirectly, part of this. With this, oh, let me not forget Dilip sir. Oh. Literature. Sometimes the people, those who are very close to you are forgotten. That's the problem there. When the relation is so close, then such kind of forgetfulness comes. So Dilip sir, thank you for helping us technically.
With this, I call upon dear Sunita Ma'am to declare or to call it a day. Thank you. Yes, it was a wonderful day really, wherein we literature people, we never get chances. Always it is put at the back. No, this time we got a chance. Thank you very much, ma'am. Thank you, sirs. It's dispersal now. विश्व दरबार ओडिया भाषा साहित्य ओडिशार संस्कृति कला भास्कर्य और प्रकृतिर स्वतंत्रता रही ओडिशार एही विभव को उपस्थापना करुछन्ति संगीत माध्यम आम DAV परिवार कलाकार मैंने Thank you.
पुणी थे धन्यवाद। समालोचक आंदोलन मत लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाजर दर्पण, पुणी ज्ञानर रत्न संपुट जहाँ सत्य शिव सुंदर, पुणी एकांत शुद्ध भूत एवं गंधमय होची यार अभिमुख। लेखिका बेट्रेल मतरे लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोसाइटी, साहित्य समाजर अभिव्यक्ति। से तो सब जुगे सब समय साहित्य आसनर सृष्टि। आज साहित्य सभारे आमर मुख्य अतिथि भाव में जोग सांप्रतिक जुगर कवि गाल्पिका मैडम श्रीमती सुमिता बेहेरा बापी जहाँ श्रद्धा मैडम नमस्कार, आपण स्वागत करुँ। दक्षिण पार्श्वे उपवेशन कर आदरणीय अध्यक्ष माननीय धाराश्री पाड़ी मैडम, मैडम नमस्कार, आपण को स्वागत करना। छत्रपुर DAV पब्लिक स्कूल अध्यक्ष महोदय दुर्गा प्रसाद साहू आमर साथी अच्छा आमर DAV ब्रह्मपुर संचालिका रीनाक्षी मैडम, मैडम आपण को पुणी थे मुझे स्वागत जनाऊँ। नमस्कार मैडम, आपण को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार सोना मैडम, मैडम आपण को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार कवि एवं प्रजापति जन्म जन्मांतर तपस्यार फल ही कवि, कवि पुरुषर शौर्य प्रज्ञा पुणी केवे नारी सुलभ मधुर हासिनी, यार एक प्रतिबिंब होती मैडम सुमिता बेहेरा। बाकी श्रद्धा नाम तांकर परिचय तो मो को जड़े अंक चिन्ह देवा जीवाटा हुए तो दूरीकण सदृश हो पाए, तथापि आज जो ठिया निश्चित भाव मैडम के विषय विपद कह। मैडम का स्वामी का नाम हूँ शैलेन्द्र नारायण बेहेरा, तांकर पिता होती श्रीनिवास बेहेरा, माता होती शोभा देवी। मैडम का शिक्षागत योग्यता स्नातकोत्तर पुणी B.Ed अच्छी सहित पुणी हिंदी में से वर्धा प्रचार समिति पक्ष रत्न पास कर। मैडम का जन्म है जुलाई 24 तारीख 1969 मसीह। मैडम को निशा हूँ कविता कहानी उपन्यास प्रबंध लेखन करने, पुणी से रही जाना पुणी आग को जाइए। सब बड़ कथा समाज सेवा भी सी कर संगीत भी बहुत किसी ज्ञान रही, पुणी संगीत को भी से बहुत माने प्राण भरी भल पाती। पेशा हूँ जड़े गृहिणी, प्रकाशित अनेक किसी प्रबंध गल्प कविता समाज संवादपत्र धरित्री संवादपत्र कादम्बिनी साहित्य पत्रिका एवं पुनी कथा संकलन में रही। प्रियपत्र बिंदु वर्णाली अनन्या अनुपमा स्वप्नाली सृष्टि संभार प्रतिश्रुति किशोर कालिका टिटिकी सुनापुर टिटी तारा नीलचक्र बाना विश्व नयन गेटवे ऑफ ओडिशा आह्वान आहरी अनेक अनेक कविता गल्प सबू दैनिक संवादपत्र एवं साहित्य पत्रिका प्रकाशित हो जाए। मैडम का प्रकाशित पुस्तक गुड़िक है देखना फगुण आसीगला, ये हूँ कविता संकलन, बृहत गल्प संकलन नाम हूँ आर्या, एक क्षुद्र गल्प संकलन मैडम लिखी जाइए ना हूँ एरुंडी। मैडम अनेक संवर्धना एवं सम्मान अधिकारिणी, परंपरा प्रियपत्र प्रतिश्रुति चित्र साहित्य सम्मान इत्यादि मैडम को प्राप्त हो सारी। आहरी अनेक किसी सम्मान रही जहाँकि मोर ज्ञान परिसर बाहर। तेरे मैडम परिचय तो सरी आसला। मु बर्तमान मैडम को अनुरोध करी से मंच उपरକୁ आसी सीओ अभिव्यक्ति प्रदान करने। स्वागत मैडम।
जय जगन्नाथ। उपस्थित अध्यक्ष महोदय अन्य गुरुजी गुरुमा गुरुजी गुरुमा मोर आदर पिला माने भंजमाटी जोटा कि आम ओडिशा गर्व और गौरव से माटी आज ठिया आपण मान सहित रही निजक धन्य मन करुच्ची जेहेतु मुझे माटीर बहु से अमृता मैडम मत कहले आसवाई भुवनेश्वर धाई आसी कहले चलो कहीं या प्रति मोर आकर्षण अच्छी मोर अनुराग कुहतु दुर्बलता कुहतु बहुत अच्छी जो भुवनेश्वर सकाल चली आसी आसी तेणुक मुझे पाई कहबी गोटे पिलाटे होकर ही कहबी बड़ मनीषा होकर तुम मैंने सब अच्छा ना 8th स्टैंडर्ड अच्छे ना मुझे 8th स्टैंडर्ड मुझे बड़ नुह तुम मान पढ़ी तो आम जहाँ भी आज तुम मान सहित कथा हेबी मैंने आम कथा मु नुहे आम कथा सेटा आम 8th स्टैंडर्ड कथा मुझे किसी पाठ पढ़ेनि तुमको कारण तुम सार मैडम मैंने कौन गुरुजी गुरुमा बहुत सारा पढ़ाऊँ मुझे पाठ पढ़ेनि तेणु आम आज खाली कथा हाँ आम मन कथा कहवा मुझी तुम मैंने कह मुझी तुम मैंने शुण अच्छा पिला मैंने कहल तुम जो छोट थी से तुम माँ कौन आज कौन डाक माँ मामा मम्मी बो जहाँ भी डाकुच तुम घर जेजेमा थे माँ थे तो तुम गीत शुणी शुणी के शुच शुणुच ना एवं भी गीत शुणुच कि अच्छा आकाश रे जो गुड़ी उड़े किए उड़ेच भाभी सहर में पिला मैंने बोधे उड़े नथिबो चक्की किंतु एते सारा पिला उड़े खुशी कथा आशा करती जो अच्छा जो मैंने उड़े न से तो आकाश में देखी थी ना चक्की उड़ार राति आकाश में केबे जाइए जन्म देखीच तारा देखीच कि तारा गढ़िया चेष्टा कर आकाश में जो चढ़ी मैंने उड़ी जाती गढ़िया चेष्टा कर अच्छा पोखरी में पहुंच किए पहुंच सब काम आम करे आम मैंने बहुत किसी स्वप्न भी देखीचे जो चक्की उड़े तो आम मन भी उड़ी सागे आम भी दिने जीवन में एमती आकाश में उड़ा बड़ हवा बोली भावीचे ना नहीं भावीचे तेल आम जहाँ जहाँ पिला दिने तुम एगुड़ा सब कर सारी आगू भी किसी किसी कर धीरे धीरे तुम आउ बड़ हम तुम कौन कर पछू धीरे धीरे पलि आस बर्तमान आम मैंने जो माँ मैंने अच्छु आम मैंने चक्की उड़ाऊँ तारा बड़ू नाना बेला गीत आम गाऊना एगुड़ा आम अतीत किंतु आज मुझे तुमको कहली ना एगुड़ाक स्मृति आम सागे रही जाइए आम यहाँ मन रखी अच्छा पिला मैंने तुम जब एत कि मैंने तुम्हें मैंने आगामी जीवन गोटे भल जीवन बहुत किसी तुम पाई सारी बहुत किसी पाई सारी यही जो पाइच एठू नहीं तुम मैंने आगे बहुत बढ़ी पार आगे जापर अच्छा आम जो सब जिनस कले आम आखिरे गोटे छवि आसला ना आखि बंद कले आम देखिपार हाँ चक्कीटा उड़ूची चढ़ईटा उड़ी जाऊँगी प्रजापति पचे किए किए खाइछ समस्त खाइछे ना तो आम आखिरे जो सेटा रोचे एटा कौन कहूचे ना एटा छवि
केतेबेले मनरे भाबिबा जे आमे टिके लेखिबा मुझे ओडिया कहवाई आसी तुम ओडिया हो हिंदी हो जेकोसी भाषा हो ये छविटा जो तुम मन में जो रहीगला एको नहीं जे तुम लिखा चाहिए तो आम जो साहित्य में आलोचना करवा तो तुम मैंने एत छोट छोट छुआ तुम मान कौन कह तुम मैंने माने बहुत माने भाग्यशाली जे तुम भंजमाटी जन्म हो कवि सम्राट से उपेन्द्र भंज जहाँ ना को लेकिन आम गर्वित तुम से माटी अच्छे मैंने तुम भितर निश्चित भाव में साहित्य भरपूर अच्छी जमती निआटा तले दिखती जड़ू थाए पड़ जाए कोईला कोईला निआटा क्या दिशेनी टिके पवन बाजिले से निआटा मुख देकी जड़े से जो पवन टिके तारी अपेक्षा आम समस्ते रही आम समस्त प्रतिभा रही समस्त भर अच्छी समस्ते जड़े चाहिए जहाँ भी करें आम जो आम माँ जो आमको गीतटा शुणेले ढोरे भैया ढो जो कियारी रे गहड़ मंडिया से कियारी रे सो ये गीत भीतर जो केते जिनस थिला जते तुम छोट छोट खुनी खुनी थिल तुम तो बुझी पारि नथिबो तुम से गीतर स्वर तुम शोई जाउथबो तुम जते धीरे धीरे बड़ हम बुझिबो ढोरे भैया ढो जो कियारी रे गहड़ मंडिया से कियारी रे सो तार अर्थ धीरे धीरे बड़ हो जी हम तार अर्थ आगे बेसी बुझे तेणुक जो साहित्य अच्छी ये साहित्यटा देख जो जड़े दुखी रोचे मन उदास रोचे जो सुंदर गीत शुणुची से मनटा धीरे धीरे से उदासी भाव से बाहर की धीरे धीरे से खुशी हो तो डॉक्टर मैंने भी कहती जे गीत शुण अच्छा तुम मैंने फिल्म गीत कौ मैंने सब जानी समस्त जानी भजन किए जानी समस्त जानी किए बोली पार्टी किए भल पाँच शुणा एगुड़ा तो सब साहित्य ना जे फिल्म गीत हो भजन हो जहाँ हो एक जड़े लिखिं जड़े गीतिकार लिखिं तो यहीटा ही साहित्य से तो मन के खुशी दूसरी ना पाठर जो कविता गुड़ाक रही है मुझे मोर मन न रही पारे कि फिल्म गीत धाड़ी गुड़ा बेस मन रही कहीं कारण अच्छे पाठटा आमको इच्छा नहीं जबरदस्ती पढ़ बोली कह केजन सेमती हो हाथ देखिल नहीं संकोच कर आम भी से स्थान छाड़ी अच्छा हाँ किंतु पिलाने आमको पाठ पढ़ा सीना बाध्य कराटा किंतु आम भल पाई करा कहीं आम दिने पाठटा पढ़े कौन आम बहुत किसी जाना साहित्य साहित्य आमको गोटे भल मनीष कर साहित्य गोटे असुर को ईश्वर कर ईश्वर जान तो भगवान असुर को ईश्वर कर माने देख आम पूर्व पढ़ीचे जे दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि हेले आ सी रामायण रचना कले दस्यु रत्नाकर सी कौन करते से दस्युवृत्ति करते लोक मारुले काटुले सी एडे बड़े वाल्मीकि केमती हेले से मंत्रटा किए देला नारद मुनि देवी सेटा ही साहित्य आम माँ जो आम गीत बोलिक शुणेला साहित्य आम जो कथा कहूँ से साहित्य तेणुक साहित्य बिना साहित्य को लेकिन आम बंचीचे बंचा आम जब गोटे भल मनीष हाँ तार अवदान साहित्य अच्छा कहल गोटे सुंदर कहानी पढ़ुच तुमको केमती लगुच हाथ टेक क्या भल लगे कहानी पढ़िया आम समस्त को कहानी शुणा पढ़ा भल लगे अच्छा कहानी जो आम पढ़ा कहानीटा केमती पढ़ा कहानीटा जोटा शुणिले धर तुमको जन तुमको जन को डाकबी मत आस तुम पढ़ तुम पढ़ले कौन कले समस्ते शुणे परस्पर गपसप न कर कहानी को आम कहानी पढ़ी पढ़ा केवे ही समस्ते शुणे
आमे जदि कमा जेमती आम साहित्य अच्छी छोट पिलाकर अच्छी पूर्णछेद कमा कलन सेमिकलन उद्धृत चिन्ह अच्छी विस्मय सूचक चिन्ह अच्छी प्रश्नवाचक चिन्ह अच्छी बंधनी अच्छी ये सब छोट जो पढ़ी व्याकरण में मुझे व्याकरण पढ़ी बसनी जमा जमानी पढ़ेनि किसी आम खाली कथा अच्छे परस्पर तो आम केमी पढ़ा जे जन को शुणिले भल लगे जो पढ़ीदेला जो पढ़ा जड़े जान जे धर से तीन चरित्र अच्छी तीन चरित्र गोटे भल चरित्र गोटे दुष्ट चरित्र अच्छी किए किए मजा कर व्यंग कर चरित्र आम जाना केमी आम जब ठीक से पढ़ा तुम मान गोटे कहानी आनी ठीक तुम बयस पिलाटे कहानी को पढ़ी तमें मैंने शुणव मुझे जहाँ को डाक तुम भितर मन देखिए शुणुव कितु मुझे जहाँ को पचारि से उत्तर दब है प्रस्तुत कहानी शुणा अच्छा तो मो कहानी केमती पढ़ुची तुम मैंने से मन देखिए शुण कौटी आम पूर्णछेद अच्छी जी गप कर डाकि मो आखि समस्त देखुची जो कौटी पूर्णछेद रही कौटी कमा रही कौटी विस्मय सूचक चिन्ह रही तो आम केमी जाना आम तो पढ़ले तो जाना ना शुणिले तो जाना ना तो मुझे तुम गोटे छोट कहानी आनी बहुत लंबा नहीं देख ये गोटे पृष्ठा मात्र आगे जानी है शुणा मुझे जहाँ को तुम भितर डाकि सी आसो पढ़ाई नितिन दाड़ी प्रस्तुत अच्छा कहानी ना है नटवर कहानी ना नटवर माने ता डाक ना है नटिया शुण समझ शुण मुझे जहाँ डाकि कितु ठीक से पढ़ मुझे गोटे पार्वती आस पढ़ बोली डाकि तुम जन को शुणुता आणिबटी 5 घंटा आणिबटी 5 घंटा से बबुलिया टोकार पिठीटा को फटाए जेमती गुरुजी चिल्लई देइचंती नटिया गोटे डिया मारी श्रेणी क्लास रो बाहर को दौड़ा ता पछे पछे गुरुजी दौड़ुचंती नट को धरिबा एते कोन सहज को फांकरे कुआड़ जे छू मारिला जेमती धुआं हो गला तो आज ताकू धरिबार पण करी गुरुजी सीधा चलिले नट घर को कहीं गले ना पिला जुआड़े बुलू से तो घर को फेर ना तो गुरुजी जाकि कौन कले ना नट घरे जगिकी बसिले कहला आसु से केतबेले आसुची आस 2 घंटा परे फिर दर्परे नट जेमती घरे पशिची गुरुजी कौन कले ना ताकू सीधा मारी बसिले बापा को काबा है कि चाहिए बापा को अपने डाक्टर मामा बाबा मम्मी डैडी बापा को कथा कौन गुरुजी घरे 2 घंटा धरी बसुँच किसी काम नहीं करना आज नटिया कहीं भिड़िकी धरदे नट एमती कौन अपराध कला कि बुझु बुझु कथा कौन नट सबुदिन स्कूल को जाऊनी किसी होमवर्क घर पाठ जोड़ा किसी करूनी आ दुष्टामी से फर्स्ट प्रथम है सबुठ गोटे मारात्मक दोष नट कौन करता जान परीक्षा सी फेल होता आ बापा को दस्खत करेगी स्कूल में दे आसला है प्रोग्रेस रिपोर्ट में कौन करता निजे बापा को दस्खत कर वर्तमान परिवेश गंभीर कौन करा नट ए सुधुर कमी चंचल स्वभावर नट स्थिर हेले सीना कि से दिन नटर मौसा आसते नट घर से भी जड़े शिक्षक सबू सी शुणुले सी कहले अच्छी उपाय अच्छी से माँ बापा को शिक्षक को आजे जो छात्र छात्री नट समस्त को चेष्टा करा पड़ो जड़े कले हेनी एका सांगे समस्त एकाठी पचारे समस्ते किए किए कहल नट बापा बो गुरुजी कथा किए कहते मौसा कहते
କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଥିରେ ରାଜି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ରାଜି। ମଉସା ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ। ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ମେଡିଟେସନ କହୁଛ ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁକରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ତମର ତ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଅଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଢିଲା ବେଳେ ଭାବୁଛ ସେ ସାଙ୍ଗଟା କ'ଣ କଲା ତା ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ନା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମନଟା ସ୍ଥିର ହବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠକୁ 5 ମିନିଟରେ ପଢୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟରେ ମନେ ରଖିଦେବା। ଏତେ ଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନର। ତେଣୁକରି ମଉସା ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନିୟମିତ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହବ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତମ ସବୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନରୁ ଏଇ ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେଟା ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗେ। ତ ମନଟା ସିନା ସ୍ଥିର ହେଲେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ତମ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିବ ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ କିଛି ମନେ ରହିବନି ନାଇଁ କି। ସେମିତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଧର 45 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ 2 ମିନିଟ୍ ବସ ଫଳରେ କ'ଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଏକାଗ୍ରତା ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ପଢ଼ାଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଟା ବି ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇଆ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଏଇଆ କରିବେ। ବାପା ମାଆ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାପା ମାଆ ଘରେ ସୁସଂସ୍କାର ଦେବେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବେ। ଆମେ ଯାହା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳଦୁଆ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଧର ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ହେଲା। ଘରର ତଳଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତ କରିକି ନ କରିବା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଘର କରିବା ସୁନ୍ଦର କଲର କରିବା ସୁନ୍ଦର ସଜେଇବା ଡେକୋରେସନ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆଟା ହେଲା ହାଲକା ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ ହବ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି। ତାହେଲେ ମୂଳଦୁଆଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ପାଇବା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପିଲାକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେଲେ ତାପରେ ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଜୀକୁ ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ କରନ୍ତୁ ନଟ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହଉ ବଡ଼ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇପାରେ ହୁଏତ ଆମ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆସିପାରେ ବା ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖୁଛ ନା ସେଥିରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ତା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡକ୍ଟର ହେଉଛେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ସିନା ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବା। ଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଆମେ ଯେ ନଟବର କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ ସରିବ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ ନା ଆମେ ଭଲ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଲ ଜାଣିବା ତେବେ ସିନା ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ନଟବର କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି କେହି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନଟ କହିଲା ମୁଁ ତ ସୁନା ପିଲା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ପାଠ ମନେ ରହୁନି କ'ଣ କରିବି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋତେ ପୋଖରୀ ତୋଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏଇସବୁ ମୋତେ ଦିଶୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଟ ବହି ଧରି ବସୁଛି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ପଢ଼ାରେ ମନେ ରହୁନି। ଏଥର ସତ କହୁଛି ସବୁ କଥା ମାନିବି ଆଉ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ହେବି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ। ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ
से मौसा कहले आपण आमको ठीक भाव में मार्गदर्शन कले माने आमको भल रास्ता देखले आमको कथाटा बुझेदेले खाली शासन करदेले हेनी से आमको सबकिछ करें पड़ो पिला माने देख नट के सुना पिला देख सी तार भूल स्वीकार कला हाँ मत पढ़ला बेले खेल पड़िया दिशुची पोखरी दिशुची है तोटा दिशुची कि जो बुझेदेले मौसाटा केमी से मन रखिपर पाठ पढ़ी पार से सी मानिगला तेणु तुम मैंने कौन तुमको जी तुम सार मैडम बुझाऊँ बापा माँ कहते तो तुम से कर्तव्य कौन कथा कौन मानव ना एथर सार मैडम कथा मानव किए मानव हाथ टेक समस्त के हाथ टेकी जाओ फोन कर पचारि पढ़ला किए मानिले किए मानिले तुम सब बहुत भल पिला मुझे देखी जापर शुण गुरुजी कौन कहले शुण गुरुजी कहले आप मार्गदर्शन ठीक भाव में कले मुझे बर्तमान को डाकि तुम मित्र आमर भी बहुत बड़ भूमिका रही छात्र विकास बाबा बो भी मौसा कथार सहमत हेले आगामी जो परीक्षाटा है नट बहुत भल नंबर रखी पास है गुरुजी जो घर को आसिले कौन नहीं आसिले बेतन ना मिठा आउ बेतन नहीं आसिले मिठा नहीं आसिले सेमती पिला माने तमे माने भी एबे तुम माने बहुत छोट है तुम मान को जहाँ तुम सार मैडम कहे मानिव घरे बापा माँ कहे मानिव गुरुजन कथा मानिव आम समय थिला आमर पड़ीसा घर जी मौसा मौसी अजा हे आम कान पड़ी जाबड़ा थे भी आम बापा माँ कहते ठीक कर दुष्टा कर मार दे कि बर्तमान आम बापा माँ मैंने से कहना आम टीचर मान को जाकर आम घर कहीदे आसते दुष्टा करुचे देहर ऊपर को गोड़ गोड़ पिटब बर्तमान तुम से टिप्पणी देते तुम पेरेन्ट्स भी पहुँचे आम पिला मारल आम जो छुईलु तुम मारदेल यही परिवर्तन हो सारा से अधिकार आउ ना पड़ोशी मानकर अच्छी ना बंधु मानकर अच्छी ना तुम गुरुमा गुरुजी सार मैडम मानकर अच्छी यहाँ कहीं से मधुरता कहीं से अधिकार जड़े कहीं कहीपर कि जापर कि बुझिपार कहीं देख मो साहित्य यहाँ तुमको जहाँ भी कहूँ साहित्य कहूँ जदि नट भल कथा शुणिकी परिवर्तन है अच्छा जो योग प्राणायाम आसन एगुड़ा जो कहली एगुड़ा मौसा जानले केमती निश्चय कौट पढ़ी से साहित्य केवल मनोरंजन नुहे गोटे गोटे जड़े गोटे बंकिम चंद्र वंदे मातरम डाकिदेले सारा भारत एक हो गला स्वाधीनता गोटे कलम शक्ति आते शक्ति अच्छी खंडा कलर सब शक्ति अधिक अच्छा वंदे मातरम कौन लिखाई कलम वंदे मातरम बंगाली नुहे से संस्कृत बंकिम चंद्र जी लिखिले कवि सी बंगाली है तो गोटे वंदे मातरम डाकरे जदि सारा भारत एकाठी है विदेशी को आम देश को तड़ापी देहरे जो रक्त गरम है ना आम भी आस महात्मा गांधी से कस्तूरबा थे कस्तूरबा पूरा घर लोक कि देखला स्टेज में सी अच्छा कहीं देखिए लोक अन्य स्त्री लोक मैंने कहे स्त्री कस्तूरबा एत बड़ लोक जी आस स्वाधीन समय आम कहीं न जावा ताले से जो जिनस साहित्य कथा तुमको कहूँ तुम्हें मैंने भी जब चाहब तुम्हें मैंने छोट छोट कि लेख सबुदिन खेल अच्छी ये जितो चॉकलेट पाइब चॉकलेट नहीं हाँ खेल अच्छी जी जितो सी चॉकलेट पाइब हाँ ताले साहित्य कथा कहती तुम्हें मैंने चाहिए पिला माने सब कर अच्छा मो कथा शुणिकी किए मन पछरे कि गपुच धड़ा ड्रेस पिंधिकी तुम मैंने कौन क्लास पढ़ी भल लगुनि कि भल लगुच ना भल लगुनि आ गपुच समस्त देखुची
तमे माने किए से मते आज कथा दब जे गोटे धाड़ी हो पछे गोटे धाड़ी हो पछे लिखिबो एमती लिखिपार केते सुंदर प्रजापति उड़ी जाउची तो प्रजापति देहरे केते सुंदर रंग किए मत कथा दब तम भीतर हाथ टेकी जे कथा दब जे मु किछि लिखिबी से हाथ टेकी आगे लिखिबनी 3-4 जण लिखिबो किछि कष्ट नहीं तमन को भीतर किए राति रे सोइला बेले किए लेख सारा दिन कौन कल बहु पचे 2टी गाड़ी 5टी गाड़ी तमे लेख तुम ना कण तमे लेख बहुत बढ़िया आम एटा कहीं लिखा कारण अच्छी जिते आम परदिन पढ़ा गतकाली आम कौन कले कौन भल कले कौन मंद कले केते समय आम फोन रे खेली नष्ट कले सेटा भी लिखिथिबा कि फोन रे खेलुछ तम भितरु पहले जल्दी सुनो मो कथा सुनो जो माने खेलुछ तमरा सब बेले मुंडरे गोटे रहिबार अछि जे आमे छात्र छात्री आमको नहीं कि भविष्य तैयारी आम देशर आम जातिर आमे किपरि हेबा उचित आमे फोन रे केते समय खेलिबा उचित मो कोनी जमा खेलनी किंतु मु एइटा भी जानि छी फोन टा धरि देले थरे ना छाड़िया भी इच्छा सीटा तुमर भी होनी तुम बापा माँ भी होनी तुम अजायर भी होनी किंतु अजायर एटा किसी काम नहीं बापा माँ पढ़ा सरी जाइए तुम्हें माने तुम बहुत बड़ दायित्व रही तुमको परिवार अच्छी बापा माँ ना रखार अच्छी देश जातिर ना रखा खेल बहुत समस्त हाथ टेकी सुना पिला मुझे जानी मानिगला खेल घर कहार मना करूना कहार कौना जे खेल ये कर खेल कहार कहते कहार कहना ना तमाने से माने हमरो भल कहते ना खराब कहते भल हां तला खेली अभी खेल ना अच्छा सुनो मु जो तमन कहली जे कविता लिखिबा एटा तो कहानी गला पढ़ी डाकी समय मिले तुमको पढ़ा कविता लिखा अच्छा आम तो छोट छुआ शुण कविता केमी लिखा जाए कहीं लिखा जाए कहानी कहीं आम लिखा प्रथम कथा तो आम कहानी लिखा कविता लिखा किए कह तम भर किए कह आम कविता कहीं लिखा तुम कह सुना झील कह ଆମର ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିବ କି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଥିଲୁ ଆଉ ବଡ଼ ସେଟା ପଢ଼ିପାରିବା ମୋ ନାଁ କ'ଣ ମାମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଆମେ କବିତା କାହାଣୀ କାହିଁକି तुम ना कौन ताली कहीं साहित्य रचना कर कहली डायरी भाया लिखा विधाड़ी लिखा मनर भावना भी लिखा आउ किए कहीं कहीं कविता लिखा ये तीनटा कथा भी शुणिदेले साहित्य साहित्य को उन्नति करने साहित्य विकास से लिखे सी भावना को लिपिबद्ध करेंगे किसी वर्ष पर से देखिए सी खुशी हे श्रद्धा कहले सेमती साहित्य आम ए लिखा साहित्य द्वारा आमर निजर आमर परिवेशर आमर जातिर जाति माने ब्राह्मण कौन एगुड़ा कहूँ मानव जाति गोटे जाति भगवान सृष्टि कर छाड़ी सेटा है मनुष्य जाति आ कौन जाति ना दुनिया कौन जाति नहीं केवल मनुष्य गोटे जाति
तो तार विकास पाई साहित्यर जदि विकास हम तेबे ही देशर विकास हम है। तेणु मातृभाषा प्रति आमर मन सब भल पाइबा रहा उचित। तुम मैंने काली जी बहुत बड़ हो तुम मैंने धर बाहर को गल धर बम्बे गल ओडिशा छाड़ी तो बहुत जगह तुम देखी से छुआ मान सब ओडिया शिखेबारे भूली जाती और बहुत गर्व कहती आम छुआ ओडिया कहीपरि लिखि पढ़ी पारे मैंने कि गर्व आम ओडिया आम ओडिया लिखि पढ़ी पारे आम छुआ पाना बहुत गर्वर कथा। यही मानसिकता पिलाने तुम गोटे अनुरोध करुँची एटा केबे तुम भितर को आनिबनी जे मु ओडिया पारुनी माने माने बहुत बड़ बड़ काम करछि लज्जा आम ओडिशा वासी लज्जा आम ओडिया मान लज्जा ये कर सेमती ओडिया भूल ना तुम मैंने भविष्य भी बाहर रुह तुम छुआ पिला हेले भी ओडिया शिखेब ना ओडिया तो लुचि आगे नहीं तुम भर के टेन्थ पर हुए तो ओडिया छाड़देव अन्य किसी पाठ पढ़ो कि ओडिया को भूल कारण से मातृभाषा हाँ ना नहीं। अच्छा तुम मैंने जो कविता लिख तुम मान तो लिखला भाया कविता लिखिकी जानी तुम मैंने एमती लिखि पार कहीं तुम मैंने प्रजापति पचर गोड़ेच तुम चकी उड़ेच तुम पोखरी में पहरीच तुम मैंने तारा गणीच तुम सब कर किसी बाकी नहीं तुम कविता शुण बड़सुची पानी झर झर केते सहज ना सरल शब्द वाक्य बड़सुची पानी झर झर केमितिका जीव स्कूल को सुनी कादुअरे दांड सर सर झर झर सर सर आम सब गोटे प्रथम पढ़ीचे बड़सुची पानी झर झर केमितिका जीव स्कूल को सुनी कादुअरे दांड सर सर बहिलाणी बा सिरी सिरी बा माने कौन सुना पिला सब बहिलाणी बा सिरी सिरी कागज तियारी बोईत को धरी पाद चिपी चले फिरी फिरी है फिरी फिरी पाद चिपी आउछि घरे यदि बो बाबा शोई थे वर्षा दांड को पानी को से जाऊँगी चिता खाइबा से पाद चिपी जाए आम जहाँ लिखा सी मानने बास्तवता सहित मेल खाऊ आकाश तोड़ी लिखा है एमती सरल छोट छोट शब्द नहीं आम कविता लिखा मुझे ये पढ़ेबी आज जी कविता लिख अमृता मैडम को देले मुझे जानी किए लिखी बहुत खुशी है लिख ना हाँ चूर्ण मुन्न मन छक पक चूर्ण मुन्न मन छक पक रफ खातार कागज चिरीची भय छातीटा धक साहित्य खाता गणित खाता भूगोल खाता इतिहास खाता विज्ञान खाता चिरेनी कहीं स्कूल पढ़ा रफ गोटे खाता जहाँ जिते पारे अत्याचार कर तेणुक चूर्णमूर्ण मन छक मैंने भय रफ खातार कागज चिरीची भय छातीटा धक धक कौन है कागज चिरा ही काम हो गला डबा तैयारी गला बोई तो चली झुली झुली बोई तो चली झुली झुली केते भल लगे स्कूल छुट्टी थिले सांग मेले सुनी खिली खिली पानी जाऊँगी डंगा आसला गोटे बैग लेके स्कूल जा इच्छा कर से संडे रविवार छुट्टी दिनटा पड़ी जाइए यही सुजोग सुजोग छाड़ा छाड़ा ना सरी ना आकाश तारा मिट्टी मिट्टी आकाश तारा मिट्टी मिट्टी सुनी चुनु मुनु गहल भितर बोध कौन सरीगला निद आसीगला आकाश तारा मिट्टी मिट्टी अर्थ राति होगा कौन है राति होगा आम लिखिले राति होगा आम कौन लिखिले आकाश तारा मिट्टी मिट्टी अर्थ राति राति होगा न लिखिले भी जे शुणिले बुझे जे राति होगा आकाश तारा मिट्टी मिट्टी सुनी चुनु मुनु गहल भितर अंधार हेलानी किटी किटी केमती लागला कविता
भी बढ़िया कविता आनी तुम पे तो मुझे लिखिकी तुमको शुणेबार यही उद्देश्य है यही कविता गोटे भी कष्ट शब्द ना आम जिते भी कहानी लिखा शुण पे मन दे शुण आज ना काली तुम मैंने लिख जिते भी ये मन रख जिते बेले भी आम कविता लिखा आम आमर कथित भाषा लिखा आमको बहुत सारा कष्ट शब्द डिक्शनरी खोजिकी आणिकी लिखा आवश्यक नहीं आम मन जहाँ भावना आसूची जहाँ आवेग आसूची ताकू ही आम लिखा आम एमती लिखा जमी समस्ते बुझीपारे ये कविता को छोट छुआ भल पाइबे बड़ मैंने भी भल पाइबे आम जो लिखा ये गोटे ध्यान दबा आम सरल भाषा लिखा छोट छोट शब्द लिखा तेरे से छुई मोर बही चार्टा आनी तुमको देखी तुमने भी लिख दिने बही लिख तुम पढ़ा तुम्हें काली की इंजीनियर हम डॉक्टर हम कि बिजनेस कर पायलट हम कि हम कि साहित्य गोटे जिन जोटा कि तुम मैंने मोर मोर आनी यहाँ मोर प्रीति पट्टनायक बहीटा ये बही केवल कविता अच्छी तुमने बुझे सब कविता किसी जान कि बुझ कविता यहाँ मोर गोटे बृहत गल्प संकलन आज्ञा यही बही को तुम मैंने पढ़ कारण ए जो चारिटा गप अच्छी बड़ बड़ गप से आगे बड़ हेल्ले पढ़ी पार तुम तुम घर भी पढ़ी पारे ये बही अच्छी चार्टा गप गोटे अच्छी नगर बधु आम्रपाली आउ गोटे अच्छी पूर्णवा उर्वशी पौराणिक यहाँ ऐतिहासिक आउ गोटे अच्छी नागकन्या सुलोचना आउ गोटे अच्छी शर्मिष्ठा जहाँ मैंने छुआ जहाँ संतान आज जहाँ ना आज आम भारत वर्ष आमर है गौरव पांड शुणी तो काम कर चार्टा गप अच्छी सब आज छुआ देकी जी लाइब्रेरी पढ़ी यहाँ मोर एरुंडी बोली गोटे छोट छोट गल्प अच्छी ए 58टा आउ बही आनी पारि जानी मुझे लाइब्रेरी को देखिए चार्टा पढ़ी है तो मुझे जहाँ भी हुए जीवन में बड़ हुए किंतु ता भर समय काढ़ी आम साहित्य किसी समय दबा आम दया करूँ क्या आम निजक दया करवा जमी गोटे छुआ मैंने गीत गाइले भर दुई जन बजाऊे आम समस्त गाँव तो जो मैंने बजाऊे भर गोटे आनंद आसूला आम मैंने जो शुणुले आम भर गोटे आनंद आसला कि नहीं गीतटा भल लगे ना बहुत बढ़िया लगे सेमती आम जब किसी करुचे आम सहित आउ कि जन भी खुशी होती आज तुम मान भर कहीं गोटे कविता टे लिखिल कि कहानी टे लिखिल तुम बापा माँ खुशी हे कि नहीं आस दब तुम मैडम को दब मैडम मान गोटे लिखी से खुशी हे नहीं काली तुमको पत्र पत्रिकार बाहर आम मैंने जो पढ़ू साधारण लोक आम खुशी हो ना नहीं जब एत जन खुशी हो से कामटा कहीं करना हाँ अच्छा आम खेल टे खेलना आम चॉकलेट
गीत शिखुचे नाच शिखुचे कौन कौन सब करुचे गोटे भूली जाइए से गुड़ा टे मन पकड़ाई आम आज गोटे खेल है ये खेल भी गोटे बहुत बड़ अर्थ अच्छे छोटिया छोटिया कथारू आम बहुत किसी जाना मुझे तुम पाठ पढ़ा कथा कहूँ तुम मैंने खाली जब बही को पढ़ो किसी समय पर मुंडे किसी पशुनि किंतु से पढ़ाटा को तुम जब खेल माध्यम पढ़ो आजिकल तो बहुत प्रकार स्मार्ट क्लास है बहुत किसी है ना नहीं यूट्यूब रे सब किसी तुम वीडियो भी देखी पार्छ से जिन सहज कि यहीटा खेल पिला मन पकेगा है मोटे प्रश्न पचारि जे कह आग हाथ टेक से चॉकलेट पाइब है देखिए मैडम किए आग हाथ टेकी हाँ पहाड़ ऊपर खसला भालू पहाड़ ऊपर खसला भालू ता देह जाक कंटा चालू पहाड़ ऊपर खसला भालू ता देह जाक कंटा चालू किए और किए हाँ बोला वेरी गुड नहीं ताहार कथा मनीष को किणी दौर कि विचित्र टिक्की बाछुरी बेकरे पेघा टिक्की दांतरे कामुड़े लुगा जैसे मच्छर नहीं हाँ हाय चलो दियो को नहीं अरे गुस्सा नहीं बसा ये मच्छर क्या कर नहीं से आ जो ऐसा टिक्की बाछुरी बेकरे पेघा टिक्की दांतरे कामुड़े लुगा छुंची सुता टिक्की चढ़े टिक्की पानी रे बुड़ी मरे टिक्की चढ़े टिक्की पानी रे बुड़ी मरे ये कहबो टिक्की चढ़े टिक्की पानी रे बुड़ी मरे जे हमर टाइम का जान आउ के कहबो टिक्की चढ़े टिक्की पानी रे बुड़ी मरे ये कहबो भाबो टिक्की चढ़े टिक्की पानी रे बुड़ी मरे पानी रे बुड़ा नहीं माछो ना नहीं आउ की करबो ना वेरी गुड
କାଟିଲେ ରକତ ନାହିଁ, କୁଟିଲେ ହାଡ଼ ବି ନାହିଁ। କି ଯିବ ସେ ଗଲେ ଭାଇ ସିଏ हाँ जी गुड बसिला जेड़ा मिले धरला माछ खाइला नहीं चलो तुम्हें मैंने कविता पढ़ कहानी पढ़ एमती कर पढ़ जमी शुणिले जन को भल लगे कौ शब्द केते गुरुत्व देवा कौ शब्दटा को जोरे कहवा कौ शब्दटा को हल्कार कहवा यहाँ तुम शिखाटा बहुत जरूरी तुम जब बर्तमान कहानी गुड़ाक पढ़ बड़ पार्टी भलरे पढ़ तेज तुम जो बड़ हम इंटरव्यू देवाक चाकरी करने से तुम पढ़ी जान ग्रुप डिस्कसन हम बहुत प्रकार अच्छी से तुम तुम कहबार जो कौशलटा टेक्निकटा से तुम एत बढ़िया हो तुम जो कथाटा कह शुणा लोक भल लगे है केमती पढ़ केमती शुण आज समय से भितर मुझे करी समस्ते कहते चगलाटीए पढ़ारे मन नहीं सब बेले खाली खेल और खेल खेल करी बाई खेल करी बाई माँ पचारती पढ़ुन क्या परीक्षा पूरा आसे कहे चगला सरी पाठ खेली टिके आसे खेली टिके आसे परीक्षा फल आसवा बेल चगला खेल गला माँ कहले पढ़ ना खेल
परीक्षा फल आसवा बेल धड़ पड़ता छाती परीक्षा पढ़ रेजल्ट बाहर के छाती पड़ हुए ना वे ठाकुर के भल हाँ परीक्षा फल आसला बेल धड़ पड़ता छाती केते गुहारी करे चगला जाई दियंक गति अति माने बाबू से तो जाई दियंक गति पाठरे हेळा करी चगला पाठरे हेळा करी चगला सोचना करे बसी बसी भाबुची भलके पढ़िनी ते परीक्षा रिजल्ट आके बाहर कौन करी पाठरे हेळा करी चगला सोचना करे बसी अनुतापर लुह गड़ेई कहे माँ को आसी सीए कहे माँ को आसी मालो माँ कथा मानिबी पढ़ारे देवी मन मालो माँ कथा मानिबी पढ़ारे देवी मन समय मूल्य बुझी गलिणी सुना पिला मु हेबी माँ सुना पिला मु हेबी परीक्षा आग दिन नुहे आम प्रथम दिन प्रथम समय आमर सार गुरुमा मैंने जहाँ पढ़े गुरुजी गुरुमा सार मैडम जहाँ डाकिच देखो प्रथम दिन घर को देखिए पाठटा आगे पढ़ा मन भावा परीक्षा हमको असुविधा हेनी परीक्षा में मेचे रखिदे आगे न पढ़ी चगला भाया हम फल बाहर को सब थर ठाकुर मुंडिया लांच दीप देवी धूप देवी नड़िया देवी ये सब करने पड़े है तो कहुई नीति बाणी जान जान के लिखुच्च नई सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा सिंह जब शोची पाटे आसिक पशिज कि हरिण खाद्य आसो कौन करा पड़ो परिश्रम करा पड़ो तुम्हें मैंने सेमती पाठ पढ़ाई एति मत आज तुम कथा दियो तुम पाठ तो पढ़ मुझे जानी स्कूल पढ़ुल एत बढ़िया स्कूल आई तुम सार मैडम मैंने एत बढ़िया मत बहुत भल लगे शुणी स्कूल विषय में बहुत भल पढ़ा सब भल तुम निश्चय पढ़ो किंतु खाली आज मत शेष समय मुझे एति कथा दियो तुम गोटे गोटे भल मनीष धन्यवाद अमृता मैडम मीनाक्षी मैडम स्वर्णा मैडम समस्त को अनुरोध करुँची मैडम आपने मंच उपरक आसतु एत दूर मैडम आम कष्ट कर किसी आम श्रद्धा अर्पण कर विनीता मैडम को अनुरोध से सहायता मैडम पुणी थे आपको धन्यवाद जनाऊँगी सतरे आप बहुत सुंदर भाव में कहीगले बिंदु सिंधु आमको दर्शन कराई आपण मध्य साहित्य जन्म कल्पना वास्तवतार यार प्रसार तापर गल्प और पद्य यार रूपायित सीमाहीन समुद्र अनंत आकाश
परी यहाँ विशाल एवं विपुल साहित्य संपर्कित यही तथ्य आमको प्रेरणा दौर ता छड़ा आज खेलरे खेलरे आमर छोट छोट कुनी कुनी छुआ मानक साहित्य सचना जो प्रेरणा देगले से आम आपण निकटते ऋणी सुमिता बेहरा और छात्रपुर D.A.V पब्लिक स्कूल मुख्य सुजोगित दुर्गा सर समस्त पर्यवेक्षिकागण और मोर सतीर्थ सहकर्मीगण मोर प्रिय छात्र छात्री वृंद को साधारण नमस्कार। आज लिटरेचर कॉन्क्लेव अर्थात साहित्य सभा तार शेष पर्यायर उपनीत प्रथम थर पर आयोजित तीनोटी भाषा साहित्य तथा हिंदी इंग्राजी और ओडिया जो कार्यक्रम आयोजन करागला खूब प्रशंसनीय एथिपाई आम विद्यालय अध्यक्ष महोदय प्रोत्साहन प्रशंसा योग्य। सुमिता मैडम बहुमूल्य समय प्रदान कर ओडिया साहित्य महनीयता तथा विभागीकरण जो वक्तव्य प्रदान कर उच्च कोटिर यही कार्यक्रम को सफल तथा सुचारू रूपे परिचालन करने लगी पर्यवेक्षिकागण को अत्यंत परिश्रम और दिग्दर्शन बेस उत्साहजनक शेष आज साहित्य सभा सुचारू रूपे संपादन कर आपण योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में कार्यक्रम को सफल कराइबारे समस्त शिक्षक और शिक्षयित्री तथा विद्यालय अन्य कर्मकर्ता मान अवदान तथा साहचर्य रही धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापन कर धन्यवाद।